all very good evening. So we will see cognitive. I'll try to finish cognitive and postmodernism. Okay, थोड़ा सा हमने cognitive last class में देख लिया था, थोड़ा सा बाकी है and scholars mainly बाकी है. So just before I begin with the scholars, I'll just give you a brief overview. So what cognitive suggested was culture is a set of mental model. Okay, and the aim is to duplicate this mental model so that one could think like a native. Okay, this is what they suggested, and is case me in order to think like a native, you have to step into the mind of the native. So here comes theory of mind, that is stepping into the mind of the native, and how to do so? By linguistic analysis. Okay, linguistic analysis, this is by Sapir-Whorf hypothesis, that they say that replication of classification model will help us understand the categories, native categories. Okay, and this is what is called as the domain, native conceptual categories, how they categorize the outer world. And finally, after the domain, what concepts are used to sort the elements in that domain, that is called as componential analysis. Okay, and finally the schemata, that is the experiences. Okay, so we think according to our prior experience. I think schemata ज़्यादा नहीं बताया था पिछली क्लास में. So we think according to our prior experiences. Okay, so what means हमारे जो बचपन के experiences हैं, that is what makes us think in a particular manner. Okay, so आप कई बार ऐसा हुआ होगा कि बचपन में जब आप IIT वाईआईटी की तैयारी करोगे तो आपने कुछ टाइप के सॉन्ग सुने होंगे उस समय वॉकमैन और इस टाइप के हेड सोनी का जो वो आता था USB प्लग के साथ वॉकमैन टाइप का. तो नॉर्मली पहली बार हम लोग को मिला घर से बाहर निकले हॉस्टल के टाइम पे, एंड सर्टेन 90s वाले सॉन्ग वी यूज्ड टू लिसन, और मे बी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी पॉप सिंगर्स थे उनके गाने सुनते थे. आफ्टर 10-15 years ब्रेक अगर आप वो गाना दोबारा सुनो तो some kind of nostalgic feeling actually arises. Okay, some kind of past. Okay, या फिर सपोज करो कि if I tie some kind of some black color cloth on your eyes and you're not allowed to see, and I give you some fruit maybe. Okay, and based on touching of that fruit you might say it's an apple. Okay, ये apple कहाँ से आ रहा है? Basically your touch basically is activating certain or triggering certain prior experience. Okay, that prior experience has created some kind of past memory and that is called as schemata. Okay, so हम लोग बचपन से ही, they are saying that हम लोग जब बचपन से बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, what our brain is doing, our brain is classifying those experience, putting certain things under certain categories. ठीक है, कुछ and the moment that experience get triggers again, मतलब जरूरी नहीं कि exactly same चीज हो, but anything similar to that happens, that particular schemata get triggered again. Okay, and that creates our action, that makes us how we are perceiving any phenomena. So same चीज happening outside, we might be understanding it differently based on our past experience. हो सकता है मेरे मतलब तो बाहर सेम ही चीज हो रही है बट मेरा कोई और स्कीमेटा वो ट्रिगर कर रहा है, आपको कोई और स्कीमेटा ट्रिगर हो रहा है. तो इट माइट बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, इट माइट बी अ बैड एक्सपीरियंस फॉर यू. ओके, so when I see crowd maybe so some people have like good feeling, मान लो मैं क्लास में और क्लास पूरी भरी हुई है. Okay, so I have a good feeling, but there are certain people who are afraid of crowd. So a schemata that is triggered in my mind seeing the crowd and schemata that is triggered in your mind seeing the crowd is different. Okay, and that is on the basis of past experiences. So this is what we have to replicate by cognitive anthropology. Okay, now componential analysis is the use of criteria to understand how the objects in a domain are sorted. तो मान लो कि डोमेन है फर्नीचर, अब उसमें सोफा है, चेयर है,
और मे बी डेस्क, मे बी पोडियम, बहुत सारे अलग अलग फर्नीचर आइटम्स हैं. अब आप सोफा को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? मे बी बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, बेस्ड ऑन प्राइस, बेस्ड ऑन एनीथिंग. Okay, so that is the componential analysis. Now let's talk about the scholars. Two major scholars that we are supposed to read is, first one is Harold Conklin. Okay, so सीधा सीधा इनका contribution है. Harold Conklin actually went on to study Hanunu tribes of Philippines. Actually he was working with US Army, ठीक है, जो फिलीपींस में पोस्टेड थी एंड कोल्ड वॉर के टाइम पे, एंड जहाँ पे इनको मौका मिला हनूनू ट्राइब्स को स्टडी करने का. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट ही डिड वाज ही क्रिएटेड इंग्लिश हनूनू डिक्शनरी. English Hanunu dictionary, and this was approximately 600 पेज डिक्शनरी. तो जब इन्होंने ये ट्रांसलेशन किया तो देन ही फाउंड आउट दैट there are several English words which do not have a reference in Hanunus, and also there are several Hanunu words जिसका कोई English word नहीं है. Okay, so you have to use several adjective to explain that word. Okay, but there is no word or no exact word in translation for several Hanunu words. Okay, कई सारे slangs हैं, कई सारे ऐसे emotions हैं for which there is no English contemporary word. Okay, so this is what he did or found in translation of dictionary. Second thing, he researched, or what he did was ethnobotany research. Ethno means culture, botany, you know, study of plants. So Hanunu live in forest, and what he found that in ethnobotanical study that Hanunu tribes, they know 1625 species of plants in their local environment. 1625 species, and out of which more than 90% or 93% of them are culturally significant. 93% of them are culturally significant. Okay, so in this case आप ये समझो कि I go to the forest and वहाँ पे मैं किसी पेड़ को नहीं पहचान पा रहा. Okay, I don't have any, so these are all very similar to me, all the trees. And Hanunu goes into the same forest. Now he is able to identify 1625 species. तो एकदम, तो उसका नजरिया इस फॉरेस्ट को देखने का और मेरा उस फॉरेस्ट को देखने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, because the categories in his mind is different than the categories that I have in my mind. His mind is divided into 1625 species. Okay, that much of categories are there, and for me hardly 2, 3, 4 maybe 4-5 पेड़ों को identify कर पाऊंगा. So the same forest looks different to me, and the same forest will be looking different to the Hanunu tribe. Okay, so this is what ethnobotany talks about. The third one is color classification. Okay, so here he found that Hanunus they do not use spectrum for color identification. Okay, जो हमारा वेस्टर्न साइंस का स्पेक्ट्रम है उसको नहीं यूज करते, बट दे आइडेंटिफाई ओनली 4 टाइप्स ऑफ कलर. Okay, that is four types of color. Sorry, विरू, लाक्टी, रारा एंड लाटुच. ओके, सो सिर्फ 4 कलर हैं उनकी कैटेगरीज में. फॉर एग्जांपल वी हैव रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, वाइट, ब्लैक,
n number of names. Okay, and that also depends from sex, varies from male to female. So male have relatively less number of colors and female have relatively more numbers of colors being identified. Okay, but in on an average, Hanunus, they have only 4 colors being distinguished, and that categorization of color is based on brightness or lightness, darkness, dryness and wetness. Okay, this is on this is the criteria that they use. So for example, Biru, they it represents relative darkness. Okay, and this any color with black tinge, so navy blue, black, dark green, ये सब बिरु में आएंगे क्योंकि वो उनको एक ही कलर की तरह आइडेंटिफाई करते हैं. देन Lakti represents relative lightness. So any color having whiteness, yellow, white, cream color, सब एक ही जैसे कलर है, वो एक ही नाम से बुलाएंगे उसको. Okay, now this Rara represents wetness, and any color with red tinge or dark redness, they will be called as Rara. Okay, and Latuj represents dryness, relative dryness. So green tinge will be considered to be Latuj. Okay, now he says that it's not that they cannot recognize the colors. ऐसा नहीं है कि वो डार्क रेड मरून में कोई डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, स्पॉट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट दीज डिफरेंसेस आर नॉट सिग्निफिकेंट फॉर देम. उनके लिए डिफरेंसेस का इतना इंपॉर्टेंस है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, नूअर्स दे कैन आइडेंटिफाई से मोर देन 200 टाइप्स ऑफ कैटल्स. उनके पास 200 नाम है कैटल्स के. हम कहीं जाएंगे भीड़ में, अगर बहुत सारे भेड़ बकरियां खड़ी हुई हैं तो विल से ये वहां पे बफेलो हैं, काउज हैं, दैट्स इट. ओके, अब ऐसा नहीं है कि 2 काउज के बीच में हम डिस्टिंक्ट कर नहीं सकते. कैन वी डू दैट? यस, based on size, based on color, based on the horn size. Okay, I can say that the other one is stronger, maybe bigger, has a bigger horn. Okay, looks of मतलब उनका physique थोड़ा अलग लग रहा है. We can distinguish, but is that difference important for us? No. And since that difference is not important for us, we basically we categorize them in a single category. बोले कि ये काव है सबके सब, बाकी सब जो ब्लैक है वो सब बफेलो है. But for Nuers, these differences significant, and that's why they view the same cattle in different categories. Okay, हमारे अंदर हमने उनको एक ही कैटेगरी में डाल दिया और उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज डाली. Okay, so the same phenomena might be visible to different individuals from different cultural aspects differently, क्योंकि जो कैटेगरीज हैं देखने की, जो लेंस है देखने का, वो बहुत अलग अलग है, and that's why different image perception will be there. Okay, so this is what he was also highlighting, that it's not that the eye cannot recognize difference between the colors, but those differences are insignificant for them. Okay, ऐसे ही जो मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया था, जैसे शाहरुख खान है आपके घर पे आ रहा है, तो वो डिस्टिंग कर देगा कि एक महिला है एक पुरुष है, सेम मेल और फीमेल फैंस आर देयर, दैट्स इट. बट ही वोंट डिस्टिंग्विश कि कौन बुजुर्ग हैं कौन यंग है. एवरी फैन इज इक्वल. ठीक है, मतलब 20 लोग खड़े हैं, 20 फैंस हैं मेरे, एंड यू गोइंग टू द सेम प्लेस. तो ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली डिस्टिंग्विश कर दोगे कि बस एक कुछ ग्रुप ऑफ महिला हैं, कुछ ग्रुप ऑफ some woman, one woman is your mother, one woman is your sister, one woman might be your grandmother, okay, or maybe your aunt, and you are distinguishing, means the categories to view the same people is different in your mind, and than a celebrity entering into your house will be different. Categories alag alag hai, and इसीलिए the same phenomena might be perceived differently, and this is what has been used in artificial intelligence. जो अभी ओपन AI चैट GPT है, वो इसी मॉडल पे बना है.
लैंग्वेज पावर्ड मॉडल है ये। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, जब आप चैट जीपीटी के बारे में करंट अफेयर्स वगैरह में पढ़ते हो तो वो क्या बताता है कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल क्या है? बेसिकली ये वो हर पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप को स्टडी कर रहा है, उनकी लैंग्वेज को स्टडी कर रहा है, और उस लैंग्वेज से क्या पता चल रहा है? कैटेगरीज, नेटिव कंसेप्चुअल कैटेगरीज। एक एआई कैन टॉक टू यू just like any other human is talking to you. That is only possible when I say something and you understand something similar. Okay, so basically chat gpt का मतलब although source code open नहीं है, but जो basic idea है वो ये है कि आपका पहले लोकेशन जानना जरूरी है कि आप किस जगह से, आपकी आइडेंटिटी जानना, इसलिए they want you to log in first. Okay, and जब आप log in करोगे तो आपके बाकी जो details हैं that is being shared to chat gpt. अब उसके बाद क्या होता है, वो आपकी एथनिक आइडेंटिटी पता चल जाती है। एथनिक आइडेंटिटी पता चलने से ये पता चल जाएगा कि बेसिकली आपकी इंग्लिश जो आप बोल रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ कैटेगरीज दैट यू हैव। ओके, एंड करस्पॉन्डिंगली व्हेन यू विल बी आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हेन यू विल बी कम्युनिकेटिंग विद चैट जीपीटी, इट विल रिस्पॉन्ड इन यूजिंग दोज नेटिव कंसेप्चुअल कैटेगरीज दैट विल मेक सेंस टू यू। ओके, आप समझो कि आप पूछ रहे हो कि विच इज द बेस्ट कार टू बाई, so it won't say buy a truck. Okay, he might recommend this, buy a truck to an American. हमारे लिए ट्रक का मतलब क्या है? जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल चल रहे हैं रोड पे। लेकिन ट्रक का मतलब इज डिफरेंट फॉर एन अमेरिकन। उनके लिए जिनको हम एसयूवी बोलते हैं वो ट्रक होती है, दैट इज द टर्म दैट दे यूज। ओके, सो दैट नेटिव कंसेप्चुअल कैटेगरीज की वो मेरे ही कल्चर के जो कैटेगरीज है उसमें ही जवाब दे, तभी तो वो एआई है। ए मशीन एज स्मार्ट और वेरी नियर विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग्स इन टर्म्स ऑफ स्मार्टनेस, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन they know the native conceptual categories. The domains that I talk about should be shared by that machine, and if they are replying back in this using the same domain, then only the conversation or communication can be meaningful. And that's why AI in the present term is using cognitive anthropologist. Okay, ताकि वो नेटिव कंसेप्चुअल कैटेगरीज के बारे में बताएं और वो प्रोग्राम में फिट किया जाए, जिससे एक मशीन दूसरे ह्यूमन से एकदम एग्जैक्टली वैसे बात करे जैसे उसका कोई पीयर ग्रुप का बंदा बात करता है, कैन इमिटेट ए ह्यूमन। और आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो, मुझे पता है कि आप क्यों, क्योंकि आप मेरे ही कल्चरल कैटेगरीज में रिप्लाई कर रहे हो। ओके, but suppose if I ask you something and then you are using some American cultural categories, the communication is not possible, the communication will not be feasible. So this is what AI is also using. Okay, now the next caller is Stephen Tyler. Remember, ये Tyler में E है, and the Tyler that we have read, EB Tyler, it's Tyler O. Okay, so don't make such kind of mistakes. थोड़ा सा इंप्रेशन खराब भी पड़ता है एग्जामिनर पे, और बहुत सारे लोग ईबी टाइलर को ईबी टेलर लिखते हैं, वो और भी मत करना, ठीक है? इट्स टाइलर। नाउ स्टीफन टाइलर, he is said to be the founding father of cognitive anthropology. So he wrote a book named as Cognitive Anthro, in which what he did, he basically criticized the previous theories. He says that कि आज से पहले जो एंथ्रो की जो थ्योरीज बनी थी, one was trying to give a universal process of change. Okay, that is evolutionist and diffusionist, and the other one was concerned with static description of society. Okay, that is functionalist and structuralist. They were concerned about the static description. बोले कि दोनों की दोनों theories, मतलब दोनों type की theories, the one which is concerned with certain change or one which is concerned with static description, they suggested he suggested that they both were looking for some kind of universal laws, or
they were trying to actually, I'll dictate this, what actually they were trying to do was, they were trying to find out certain universal organizational type, and in doing so they were picking up only those data which were convenient for them. ठीक है, क्योंकि उनको एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन कुछ बताना था, कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्रिएट करना था, कुछ थ्योरीज क्रिएट करनी, एंड दैट्स व्हाई व्हाट दे वर डूइंग वेयर दे वर merely पिकिंग अप द कन्वीनियंट डेटा एट देयर हैंड्स सो दैट उनकी एक यूनिवर्सल थ्योरी बन जाए. ओके, बट व्हाट कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट डू, cognitive anthropology does not want to create a universal organizational type और एक universal picture of all human culture कि binary opposites में है या फिर savagery से barbarism से civilization में जाएगा और something like that. वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है. Okay, and it recognizes a diversity of human culture, saying that every individual of different cultures think differently. ठीक है, एंड वही थॉट प्रोसेस, वही कोग्निटिव प्रोसेस को हमको डुप्लीकेट करना है. ओके, नाउ ही सेज दैट ह्यूमन माइंड एक्चुअली हैज बीन trained or has been built in classifying the objects in the outer world. We have a tendency to classify the objects in the outer world. Why? Basically, if in the world that which we are living, the infinite objects with infinite diversity, अगर हमने उनको क्लासिफाई नहीं किया, एंड इफ वी आर सराउंडेड बाय ऑब्जेक्ट्स विथ इनफाइनाइट डाइवर्सिटी, मेरे लिए ये चेयर, ये चेयर, ये चेयर सब एक अलग अलग हो, ओके, तो उस सिनेरियो में आवर माइंड विल बी इन अ स्टेट ऑफ केओस. ओके, बिकॉज एवरी चेयर इज डिफरेंट फ्रॉम मी, ओके, एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड मी इज डिफरेंट, सो दैट इनफाइनाइट डाइवर्सिटी कैन क्रिएट केओस इन माई माइंड. That's why we classify, and जो similar objects हैं उनको एक जगह पे एक कैटेगरी में रख देते. Now he says that this classification tendency जो है ये हमारे लिए necessary है हमारे ब्रेन को पीस में रखने के लिए, लेकिन ये अलग अलग कल्चर में, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग टेंडेंसीज है, कैटेगरीज अलग अलग है. So he is actually bringing the idea of psychic unity of mankind, but in a different manner. Psychic unity of mankind says that we think similar in similar situations. Yes, so यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल psychic unity of mankind बोल रहा है कि हाँ हमारी टेंडेंसी है क्लासीफाई करने की, लेकिन क्लासिफिकेटरी कैटेगरीज जो यूज होंगी वो अलग अलग होंगी. ओके, कैटेगरीज सेम नहीं होंगी. तो psychic unity of mankind को तो लेवी स्ट्रॉस ने भी यूज किया. उसने बोला कि हम yes we think in the form of binary opposite, that everybody thinks in the form of binary opposite. Psychic unity of mankind, and cognitive also is bringing psychic unity of mankind, but in a different manner, saying that yes, the psychic unity is that we have a tendency to classify the outer world, but the categories that we will use or that individuals use varies from culture to culture, and हमारा काम क्या है उन categories को identify. Okay, आप ये लिख लो. स्टीफन टाइलर, in his book Cognitive Anthropology, criticized previous theoretical orientation in anthro. He divided previous theories into two types. First, theories concerned with change and development. That is evolutionist and diffusionist. Second, theories concerned with static description. That is functionalist and structuralist. Right, next point. The above mentioned theories
The above mentioned theories were attempt to construct the above mentioned theories were attempt to construct universal organization types universal organization types which were linked either by similar process of change or by similarities of internal structure in order to achieve this goal only certain kind of information was considered relevant. Okay, next point. Cognitive anthro focuses on how different people organize the outer world, organize and classify the outer world. Next point. According to Tyler, humans have a tendency of classification because it is through classification that the world with infinite variability shrinks to manipulable size means some categories, manipulable size. Next point. The methods of classification are arbitrary. And varies from culture to culture. No two culture share same set of domains. ठीक है, तो इसमें बस एक बात याद रखनी है कि इन्होंने ये बोला कि हमारी टेंडेंसी है क्लासिफाई करने की. क्यों? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इनफाइनाइट वेरिएबिलिटी, एंड अगर हम क्लासिफाई ना करें, सबको इंडिविजुअल आइडेंटिटी दे दे, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स इनटॉलरेबल टू लिव इन द वर्ल्ड विद infinite variability. And that's why classification makes it or shrinks the infinite variable world into a manipulable size. That means very small size. कुछ categories है, ये furniture है सब, okay, these are my students, okay, और ऐसे करके we actually categorize and we make the world with infinite variability into a manipulable size में छोटे छोटे categories में divide कर दिया उसको. Okay, now this is what Tyler says, and this he basically used this idea to study koyas. Okay, so here in among koyas, he came to koyas, he lived there, field work किया उन्होंने, and कोया की लैंग्वेज को समझा, कोया की कैटेगरीज को समझने की कोशिश की. So he found that a lot of
phenomena that might be present in American culture and also among the Korean culture, but are perceived differently there. For example, Americans identify dew, fog, hail, snow and rain as different forms of precipitation, right? But Koyas have a single name, Manchu. Okay, dew, fog, hail, snow, rain, different forms of precipitation for Americans. अब उन्होंने बताया कि क्यों ऐसा है, बोले कि अमेरिका में ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करती है. ओके, फॉग है तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा, फ्लाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाएगी, या ड्यू या फॉग, इन सब ड्यू से भी विजिबिलिटी कम हो जाती है, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा चैलेंज होती है, राइट? एंड दैट्स व्हाई दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर देम एंड दे हैव डिफरेंट कैटेगरीज टू व्यू देम. ठीक है, while all forms of precipitation for Koyas it's called as Manchu. अब ऐसा नहीं है कि वो फॉग और ड्यू में फर्क नहीं समझते, ठीक है, बट दैट डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट टू देम. हाउ डज दैट मेक्स डिफरेंट? अगर उनके कल्चर को इफेक्ट ही नहीं कर रहा, उनके डे टू डे एक्टिविटीज को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो हाउ डज दैट डिफरेंस मेक, हाउ डज दैट इट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस? फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हो, से कोई ऐसा बिजनेस है, जैसे मंदिर, या फिर मे बी से लिकर शॉप है. तो लिकर शॉप में आप देखोगे एक बहुत अच्छा एनालॉजी है, दैट इज अंडरवेयर के जो कंपनीज हैं, खास करके जो मेल अंडरवेयर बेचते हैं, तो देयर इज एन एनालॉजी दैट व्हेन the country is, or when a particular economy is undergoing recession, the male underwear sales go very down, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है. and it a sign of recovery of any economy is that male underwear sales बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा, because usually male do not मतलब जब उनके पास पैसा नहीं होता है, तो the first thing that gets hit is the sale of underwear. तो आप बेसिकली इससे उनको रिसेशन और ये सब का मतलब that's a very significant phenomena for them कि उनकी सेल्स अप या डाउन आ रही हैं इकोनॉमी की. या मंदिर या लिकर शॉप का देख लो कि अगर किसी की जॉब जा रही है, कोई बहुत टेंशन में है, तो लिकर की सेल बढ़ जाएगी, ठीक है, या फिर कोई बूम में है तो भी लिकर सेल की बढ़ जाएगी. ओके, बट सपोज इफ यू आर सेलिंग सॉल्ट, आपका काम ऐसा है कि आप सॉल्ट बनाते हो और सॉल्ट बेचते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि इस महीने सॉल्ट की सेल बहुत ज़्यादा हाई है एंड द नेक्स्ट ईयर द सॉल्ट सेल विल बी वेरी लेस. ऐसा नहीं होगा कि कंट्री के लोग, मतलब सॉल्ट विल बी द लास्ट थिंग टू बी इम्पैक्टेड बाय रिसेशन और इकोनॉमिक बूम. नमक खाने में तो कोई ऐसा नहीं होगा कि पैसा ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा नमक खाएंगे, या पैसा कम है तो नमक ही नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होगा. ओके, तो पर्सन सेलिंग सॉल्ट और इन दिस बिजनेस, फॉर देम रिसेशन और इकोनॉमिक बूम डज इट मेक्स अ डिफरेंस? तो ये टर्मिनोलॉजी उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं. इन द सेम वे, ऑल्दो ही कैन आइडेंटिफाई कि हाँ मार्केट में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ही कैन अंडरस्टैंड, बट दैट डजंट मेक्स अ डिफरेंस फॉर हिम. ओके, बिकॉज हिज इनकम इज नॉट एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक साइकिल ऑफ द नेशन. उसकी तो उतनी ही इनकम आ रही होगी हर महीने. अगर वो 100 बोरी नमक बेच रहा है तो हर दिन, हर महीने वो उतनी ही बेचेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट कि ड्यू, फॉग, रेन, ये सब में डिफरेंस तो कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ impact or any kind of significance in their life. Okay, next, the same thing, he says that Americans recognize bamboo. Okay, that is one bamboo, while Koyas have 7 different types, or Koyas can recognize 7 different types of bamboo. Why? Because they are cultivating bamboos, and bamboo is an economic सोर्स और इट्स अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर देम. ठीक है, उनके घर उससे बन रहे हैं, उनके वेपन्स उनसे बन रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों को बैम्बू से बनाते हैं. इनफैक्ट दे गो फॉर ईटेबल्स आल्सो फ्रॉम बैम्बू, बैम्बू पिकल्स वगैरह बनाते हैं. ओके, सो हियर इन दिस सिनेरियो, अब बैम्बू इनके लिए डिफरेंट है. अब कौन सा बैम्बू वेपन्स के लिए यूज होगा, कौन सा बैम्बू बेसिकली घर बनाने के लिए यूज होगा, कौन सा बैम्बू ईटेबल है, पिकल्स बनाने के लिए यूज हो सकता है, दैट इज डिफरेंट फॉर देम, एंड दैट्स व्हाई दे कैन सेग्रीगेट देम.
But for Americans, neither they are using it for construction of house, neither they are using some kind of bow and arrow for bamboos, and neither they are basically eating pickles and all. Bamboo is only for paper making. Okay. Moreover, वो शायद बहुत सारे अमेरिकन ऐसे होंगे जिन्होंने बैम्बू बस सुना है, they have never even seen a bamboo in their life, right? So उनका एक नाम है, इनके 7 नाम है. In the same way, among Koyas, mother's brother's son and mother's sister's son, they are called by different names. Bato, animal. Okay. So, and while in America, they are called as cousins, irrespective of वो किसके बेटे हैं, मामा के बेटे हैं या मौसी के बेटे, doesn't make a difference. They are only called as first cousins or cousins, right? So it doesn't mean that Americans do not recognize कि वो मामा के हैं या मौसी के बेटे, but that difference doesn't make a difference, or that difference is not significant in their culture. Okay, they both are cousin and equally plays in the life of an individual, but here they are called different names because they are, means this names holds significance in their culture. एक से वो शादी कर सकते हैं, हो सकता है दूसरे से ना कर सकते हैं. Okay, हाँ, VAATO. Okay, so this is what he highlighted कि दुनिया को कैटेगराइज करने का तरीका कल्चर बाय कल्चर वेरी करेगा, and no two culture will have same domains. Clear है? Okay, so this is all about Stephen Tyler. Now ऐसे ही एक और स्कॉलर हैं, जस्ट टू टेल यू कि ये कोग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी कितना बायोलॉजिकल इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकता है. तो देयर इज अ स्कॉलर नेम्ड एज रिचर्ड ईव्स, जिन्होंने एक सोसाइटी को स्टडी किया जिसका नाम है लेलेट. ओके, अब उस सोसाइटी में एक बड़ी स्ट्रेंज चीज थी. वुमेन दे बेसिकली डू थिंग्स which makes them sit closer to the floor. Okay, तो जमीन के एकदम पास रह के काम करना चाहिए. Okay, like washing the floor or washing the clothes, washing the utensils. Okay, and they do not stand also properly because from the day one of their life they are told that there is something very heavy in their stomach. Okay, and इसकी वजह से वो मतलब वो खड़े नहीं हो सकते, वो डांस नहीं कर सकते, वो कुछ कर नहीं सकते. एंड दैट्स व्हाई दिस थॉट व्हिच हैज बीन पुट इनटू देयर माइंड, दिस स्कीमा फ्रॉम द डे वन ऑफ देयर लाइफ मेक्स देम डू वर्क गेटिंग क्लोजर टू द फ्लोर. मतलब वो उनको कंफर्टेबल लगता है, उनके दिमाग में ये चीज आ चुकी है, भर चुकी है. मतलब उनको लगता है कि सच में कुछ भारी है मेरे बॉडी में, मेरे पेट में कुछ ऐसा है जो मुझे खींच रहा है नीचे की तरफ. ओके, एंड दैट्स व्हाई since they have been trained like this, so their conscious has developed in such a manner. So what actually happened, cognitive scholars, they went there, sorry, cognitive scholars करो, missionaries during colonization, they actually went there and वहाँ पे उन्होंने चर्च में वुमेन को लाके बोला कि डांस. A male were dancing but the women they did not dare to dance. बोले कि I cannot stand and you are asking me to dance. So when the missionaries they asked कि why can't you dance, so they said कि भाई हमारे पेट में कुछ ऐसा है, women have something heavy in their belly that makes them stuck to floor, तो इसलिए वो डांस नहीं कर सकते. And after so much of insisting, after so much of force pulling and all, उसके बाद कुछ women they started dancing and they were able to dance as well. Plus उनको ऐसा कोई भार फील ही नहीं हो रहा था. एंड दैट एक्चुअली मेड देम बिलीव कि अच्छा ये तो कल्चरल बिलीफ थी, उनको ऐसा लगा ये तो झूठ है. ओके, धीरे धीरे वुमेन स्टार्टेड टू डांस, वुमेन स्टार्टेड टू क्लाइंब द ट्रीज आल्सो, वुमेन स्टार्टेड टू रेस आल्सो. एंड वहां से उनको ये समझ में आया कि शायद मे बी देयर वाज सम काइंड ऑफ इविल फोर्स. मतलब मिशनरीज ने कैसे बोला कि कोई
इविल फोर्स था जो आपकी बॉडी को कैप्चर किया हुआ था, हमने आपको फ्री करा दिया. And that actually led to rapid conversion among the tribal people into Christianity. This is how the Christianity actually spread among the Liliths. Okay, कि women को free करा दिया इस बोझ से. But it was mainly that cultural belief that women have something heavy kept in their belly, और जिसकी वजह से वो उठ नहीं सकती. Okay, so now you can understand this cultural thoughts, the cultural training that we get as we are born, as we get socialized in our society, so that can even have an impact on how we perceive our body as well. Okay, and that वो force वो create कर भी सकता है, force so great that I might even not lift my body. Okay, मुझे ऐसा लगे कि सच में, अब आप लोगों ने कई बार वो भी देखा होगा, एक स्टोरीज वगैरह में बताते हैं कि शुरुआत में हाथी जब छोटा होता है तो उसको लोहे की सीकड़ से बांधते हैं. ठीक है, वो चाहे जितना मर्जी फोर्स लगा ले, वो चेन कभी नहीं टूटेगी, वो लॉक कभी नहीं टूटेगा. ठीक है, बट धीरे धीरे हाथी ट्रेन हो जाएगा कि दैट नो मैटर वॉट एवर फोर्स दैट ही माइट अप्लाई, ही विल नॉट बी एबल टू ब्रेक दैट चेन. ओके, अब जब वो हाथी ट्रेन हो चुका है, आफ्टर से 10-15 ईयर्स और 10 ईयर्स डाउन द लाइन, जब वो बड़ा भी हो गया है, तब उसको एक सिंपल सी रस्सी से बांध देते. And despite being tied with a very weaker rope also, that elephant won't try even to break it. क्यों? क्योंकि he has been trained that no matter whatever force you apply, this chain is not going to break. बस वो ट्रेन हो चुका है, तब उसके दिमाग में वही परसेप्शन है, वो फोर्स लगाना ही बंद कर चुका है. He will not do it. Okay, the same way we have been trained to categorize the world. We have been trained to see the world in a particular manner. The schemas have been either by our experience or what has been culturally infused into our mind, जिसकी वजह से हम दुनिया को देखने का नजरिया हम सब का अलग हो जाएगा, varying from culture to culture, because no two cultures share the same domains. Okay, this is the cognitive anthropology. Now, certain criticism. So here, certain scholars say that this new ethnography or cognitive anthro focuses on trivial semantic domains. Trivial semantic domains like ethnobotany, colors, बैम्बू को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, कार्स को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, और मे बी काउज या कैटल्स को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली ट्रिवियल सिमेंटिक डोमेन. सिमेंटिक मीन्स लैंग्वेज में. ठीक है, तो कैटेगरीज के बारे में बात करें, एंड दे आर नॉट फोकसिंग अपॉन हाउ दिस डोमेन्स और हाउ दिस सिमेंटिक डोमेन्स आर related to whole culture. That is new ethnography का एक major criticism. Second, abstract theories regarding nature of mind. That is, we have a tendency to categorize, we have a tendency to classify things, okay, without any scientific theory, or sorry, scientific proof. तीसरा, it says it takes help from Sapir-Whorf hypothesis that language actually create categories. Okay, language coerces our thought. अगर Sapir-Whorf hypothesis सही है, so that means a person who is a bilingual, वो दुनिया को दो तरीके से देख सकता है. For example, when I am speaking Hindi, so I can have a different perspective of seeing the outer world, and as soon as I switch to English, मेरे दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा. Should happen like this, क्योंकि कैटेगरीज तो अलग है इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन की और हिंदी स्पीकिंग पर्सन की. So that means if I am speaking Hindi, my perception of the world should be different from the perception of the world that I have
व्हेन आई स्पीक हिंदी या इंग्लिश, ये तो गलत है. ओके, तो राइट, Sapir-Whorf hypothesis, Sapir-Whorf hypothesis assumption that language coerces our thought has been rejected, ठीक. Now the next one is universal. There is no universal agreement on how to enter into somebody's mind. Is language the right way or something else? Okay, so there is no universal agreement on how to enter into somebody's mind. क्योंकि आपको मेंटल मॉडल को डुप्लीकेट करना है तो यू हैव टू स्टेप इनटू द माइंड ऑफ दैट पर्सन. यहाँ पे हमने लिंग्विस्टिक एनालिसिस को यूज किया, बट दैट हैज नॉट येट बीन validated. There are multiple other alternatives that are available. Maybe in future when we develop neural links or something like that, we might better be able to enter into somebody's mind. We might better be able to see how a person is thinking and how a person is viewing the outer world. वो ज़्यादा बेहतर होगा. बट फिलहाल लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारे डिबेट्स हैं, whether language, using language is the best way to enter into somebody's mind or not. Okay, next one is the theory is ahistorical in nature. That means it fails to talk about the causality of culture categories, why and how these cultural categories were created. मतलब उसके लिए आपको पास्ट को देखना होगा, but it is ahistorical, so fails to talk about causality of culture categories. Clear है? This is cognitive anthro. The last theory that we'll see is postmodernism. Finally सारी major theories cover हो गई हैं. This is the last one. We have covered functionalism, structuralism, culture personality, symbolic, cognitive and postmodernism. Okay, अगर आज ये खत्म हो गई टाइम से तो we'll start with some questions, or else tomorrow test 2 will be discussed and next week test 3. और उसके आपका एक इस वीक में शायद कोई नया पेपर नहीं आने वाला है, तो आप लोग थोड़ा आर्कियोलॉजी को प्रिपेयर कर लो so that you attempt the test 4. टेस्ट 4 वाला पेपर अटेम्प्ट जरूर करना. एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आर्कियोलॉजी में जो बेसिकली थोड़े से कंसेप्चुअल हैं and need some greater insights, so do attend the discussion. Actually कई सारे जो doubts हैं वो वहाँ से clear होते हैं. Okay, so postmodernism. So before I begin with postmodernism, just try to understand the context and the background in which this theory or this, it's actually not a theory, this thought actually emerged. Okay, so as the name suggests, postmodernism, that is a time after the modern era. So it is a reaction to the idea of modernism. So what is modernism? So modernism again was a reaction to pre-modernism. So what was pre-modern era first? So pre-modern era was the era in which religion was the narrative that explained everything. Religion was the grand or meta narrative that was followed, right? So हर चीज का explanation religion से आएगा. That is the pre-modern era. And religion and king was the god. Religion was the center of the every explanation and king was considered to be the god. And church interfered in every matter. Church was the most powerful entity. अब modern era आया, so emergence of science, and science replaced religion. So
modernism is based on a basic ideology that state of things in present are better than past. मतलब टाइम के साथ प्रोग्रेस ही होगा. ओके, और इट इज कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ प्रोग्रेशन और थ्योरी ऑफ प्रोग्रेस, कि आज जो है वो कल से बेहतर था, कल जो था वो परसों से बेहतर था, in terms of like inventions, innovations, the technology that we have, the scientific knowledge that we have, definitely is making our today better than the past. Okay, and it basically is based on two major tenets. The first one is perfectibility of human nature. Perfectibility of human nature. That means humans are the most intelligent species on earth. Okay, and basically they are the rational beings. They're the most rational beings. Second, that is, second tenet is belief in human progress through development in science and technology. Belief in human progress through development in science and technology. ठीक है, तो रिलीजन को रिप्लेस किया किसने? साइंस ने. ओके, and it says that man is the most intelligent species on earth, most rational, and there will be development through science and technology, or progress will come through science and technology. तो यहाँ पे बोला जाता था कि God can create everything, God is the creator, divine origin, हर चीज में divine origin, religion divine origin, culture divine origin, language divine origin, everything divine origin, earth divine origin. Now comes science, basically tries to explain this phenomena saying God nahi hai, nature is there, there were certain events, phenomena that were happening and which are responsible for certain things. तो वहाँ पे हमने religious meta narratives को reject किया, science ने उसको replace किया. Okay, now what happens? Man is the creator, or man can create everything. Okay, with this scientific knowledge that we have, we can actually create anything, we can duplicate anything, we can, इनफैक्ट आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया प्लैनेट ऐसा बना रहे हैं, खोज रहे हैं जहां पे हम जा सके, वहां रह सके. ओके, क्योंकि हमने अर्थ को तो एक्सप्लॉइट कर दिया है, ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया है, अर्थ अब रहने लायक नहीं बचा, तो अब हम एक नया प्लैनेट ही, एक नया हैबिटेशन ही क्रिएट कर दें. मैन कैन बी द क्रिएटर, गॉड को रिप्लेस किया. ओके, एंड वो पावर हमारे पास कैसे आई? साइंस से. ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंड, इट बेसिकली स्टार्टेड रिप्लेसिंग, और कई सारे आइडियोलॉजीज आई, कई सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, आइडियाज दे स्टार्टेड टू डेवलप इन मॉडर्निज्म, लाइक कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, वेलफेयरिज्म, बहुत सारे अलग अलग आइडियोलॉजीज दैट वेर कमिंग अप, एंड दैट वाज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मैन्स लाइफ. और बोला कि साइंस भी इतना ज्यादा डेमोक्रेटिक होगा कि पूरी दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, एंड वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, राइट? बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड? Second World War, First World War, atom bombs were dropped, and man, despite being called as creator, the alternative came up, that is, man can destroy everything, or science can also discriminate. Science के नाम पे कौन किसकी बात सुनी जा रही थी? The one who is sitting in Europe and is a white male. Okay, somebody speaking from Europe and a white male will be considered to be a scientific person, but somebody speaking from a third world country, or maybe from a minority ethnic background, or maybe some dark skinned person, उसकी बात साइंस नहीं है. तो साइंस तो डेमोक्रेटिक था, साइंस तो इम्पार्शियल था, साइंस तो ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड था, एम्पिरिकल रिसर्च पे बेस्ड था. So how does that makes a difference that whether that statement is coming from a white male sitting in Europe or America, or some person from ethnic minority background from a third world country? Are you getting this idea? तो साइंस को भी बोला कि ये तो सिर्फ पावरफुल लोगों की वॉइस है, एलीट लोगों की वॉइस है. आप एलीट हो, आप वाइट हो, आप यूरोपियन हो या अमेरिकन हो,
तो ही आप साइंटिफिक हो, एल्स साइंस थर्ड वर्ल्ड से नहीं आएगा. ओके, सो मैन कैन नॉट बी जस्ट द क्रिएटर, ही कैन बी द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. एंड दीज काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज दैट वर कमिंग अप लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड ऑल, इन्होंने बोला था कि दुनिया का डेवलपमेंट करेंगे, या साइंस से भुखमरी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा लाइक दिस. बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, इनइक्वालिटी इंक्रीज्ड. ओके, डिस्ट्रक्शंस इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड, मिलियंस ऑफ सोल्जर्स, मींस रिलीजन तो कुछ लोगों को ब्लास्फेमी में एग्जीक्यूट कर रहा था, एंड लाइक वन बॉम्ब dropped on certain place, millions of people died, and millions of people died, and moreover they became they are experiencing extreme morbidity, not for 1 or 2 or 3 years but for decades. Radioactive hazard, so extreme morbidity, some kind of disabilities जो भी उनको आएंगे रेडियो एक्टिविटी की वजह से. तो मैन, ये जो साइंस जिस प्रॉमिस के साथ आया था, ये आइडियोलॉजीज जिस प्रॉमिस के साथ आई थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ. ओके, तो साइंस एज ए ग्रैंड नैरेटिव दैट रिप्लेस रिलीजन was also not able to fulfill its promise, or modernity was also not able to fulfill the promise that it through which it actually replaced religion. So that's why the postmodern era is the era of confusion. Era of confusion means we actually already rejected science and religion, क्योंकि religion हमने बोला कि ये subjective है, ये बेसिकली एक्सप्लॉइट करता है मार्जिनल लोगों को, हायरार्कीज क्रिएट करता है सोसाइटी में, ये लॉजिकल नहीं है. ओके, इट्स बेस्ड ऑन विम्स एंड फैंसीज. हमने साइंस लाए, अब साइंस ने भी वही काम किया जो रिलीजन कर रहा था, ये भी डिस्ट्रॉय कर रहा था, और उससे ज्यादा स्केल पे डिस्ट्रॉय कर रहा था. ओके, मार्जिनलाइज कर रहा था, एलिटिज्म क्रिएट कर रहा था. ओके, साइंस के नाम पे पावरफुल वॉइसेस अपनी ओपिनियन को थोप रही थी. ओके, एंड द मार्जिनल वॉइसेस वर बीइंग सप्रेस्ड. So that's why science was also rejected. अब रिलीजन पहले रिजेक्ट हो गया, साइंस अब रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या? So since we have rejected all the traditions, all the existing meta narratives, we do not have clear cut guidelines to do to actually lead our lives, and that is called as postmodernism, the era of confusion. Okay, in which साइंस पे भी आप पूरा बिलीव नहीं कर सकते, रिलीजन को आपने पहले रिजेक्ट कर दिया. ओके, सो व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म? ये तो एक बैकग्राउंड है कि बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म किस कंटेक्स्ट में आ रहा था, कि मॉडर्निटी केम अप विद अ प्रॉमिस विच इट कुड नॉट फुलफिल, साइंस ऑल्सो केम अप विद अ प्रॉमिस विच इट कुड नॉट फुलफिल, एंड दैट्स वाई जब साइंस में ही सब्जेक्टिविटी आ गई and hierarchical system started to crept in science also, so that actually led to the birth of postmodernism, which started rejecting all the grand narratives. उन्होंने बोला कि science also is one among several explanation of the world. There are multiple explanations of the world. मेरा एक ओपिनियन है, आपका एक ओपिनियन है, साइंस भी एक ओपिनियन है, और वो ओपिनियन किसका है? एक वाइट मेल फ्रॉम यूरोप. साइंस इज नथिंग objective or universal or some kind of factual information, but it is just one among several possible opinions that is present about a particular phenomena. Okay, तो साइंस को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और साइंस को भी कटघरे में लाके खड़ा कर दिया कि साइंस भी अपने आप में जो ऑब्जेक्टिविटी के नाम पे आई थी, रैशनैलिटी के नाम पे आई थी, कुछ नहीं, वैल्यू न्यूट्रलिटी इज नॉट पॉसिबल, ऑब्जेक्टिविटी इज एन इल्यूजन. सो दिस इज व्हाट postmodernism actually came up with. So how to begin with postmodernism? Postmodernists say that reality is incomprehensible and truth is socially constructed and is dynamic in nature. Reality is incomprehensible and truth is what is socially constructed and is dynamic in nature. मतलब you cannot perceive reality. आपकी reality कुछ और है, मेरी reality कुछ और है, हम सब की अपनी अपनी reality.
एंड दैट्स व्हाई व्हाट इज ट्रू, देयर इज नो ट्रू रियलिटी. आपकी रियलिटी आपका सच, मेरी रियलिटी मेरा सच, और मेरा सच उतना ही सच है जितना आपका सच आपके लिए है. ओके, दैट्स व्हाई रियलिटी इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल एंड ट्रुथ is something that is socially constructed. So there is a scholar named Baudrillard, he says that truth is what is socially agreed upon. Okay, जिस पे जो लोग मान ले वही सच है, जो majority लोग मान ले वही सच है. Okay, so truth is what is socially constructed and dynamic in nature. Dynamic means आज का सच कल के सच से अलग हो जाएगा, और कल का सच आज के सच को रिप्लेस कर देगा. So what is true now may not be true tomorrow, or what is true tomorrow may not be true the day after. Okay, so truth also changes with time. So you must have heard this statement, we are living in a post truth era. Okay, so post truth era का मतलब क्या है कि truth is dynamic. Truth is what is basically what you consider is true. आप आज के टाइम पे न्यूज थोड़ी ना देखते हो, आप ओपिनियंस देखते हो. Okay, they do not talk about what are the events happening around you. They give you the opinion, how that event is to be perceived. Now, what is true for you is what perception aligns with your ideologies most. अब हो सकता है कि आपको अर्नब गोस्वामी की ट्रुथ ज़्यादा सही लगती हो, क्या हो सकता है आपको बरखा दत्त का ट्रुथ ज़्यादा सही लगता हो, और मे बी सम अदर यूट्यूबर्स बेसिकली जो आपको opinion दे रहे हैं rather than just talking about the phenomena happening around you. Okay, so they basically are not talking about जो पुरानी न्यूज होती थी. आप दूरदर्शन की न्यूज सुनो, ठीक है, जो पहले आया करती थी, मीन्स आज से 40-50 इयर्स की जो क्लिप्स होंगे आप कभी देखना, तो वहां पे दे डू नॉट टॉक अबाउट दैट वाज, ये जो डिबेट डिस्कशंस वाले होते थे, प्राइम टाइम डिस्कशंस, ये नहीं हुआ करते थे. ओके, एंड एनी स्पेशल गेस्ट, एक ही स्पेशल गेस्ट आएगा कभी भी किसी भी इवेंट पे, किसी भी फिनोमेना पे बात करने के लिए, एंड ही विल बी रेडी विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, and the subjective opinions were not actually discussed there. Now what is actually happening, certain event will happen and different news channels, they basically analyze the same event in a different manner, so they have a different truth, and that is what they are saying, that truth is socially constructed and it is dynamic in nature. So this is the best possible definition of postmodernism. So they reject grand narratives. बोले कि ये एक जनरल थ्योरी कभी पूरी तरीके से सच नहीं हो सकती. ओके, and usually the grand narratives are made by, according to postmodernists, are made by those who are in power. ओके, तो बोले कि आप फिजिक्स में जितने नोबेल प्राइज मिले हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एनी अदर काइंड ऑफ नोबेल प्राइज, why don't you find anybody from third world country? Why do people from similar racial or religious background, they are getting Nobel prizes? Why not a person from Africa, India? मतलब आप उस इमोशनली मत लेना, जिनको भी इंडिया से नोबेल प्राइज मिला वो इंडियन नहीं थे. They already had left Indian citizenship and had been doing research in US or some other places, laboratories में for 22 decades or 3 decades. And in that 2 or 3 decades they have completely left the citizenship of India, and moreover has also completely sacrificed all the Indian values also. तो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना है कि सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ हो गया, वो इंडियन कहीं से भी नहीं है. Okay, he is a complete American citizen with American values. Okay, so here they are saying that कि the grand narratives जो बना रहे हैं, they are the ones who are in power. एंड ग्रैंड नैरेटिव बनाने का पावर भी उन्हीं के पास है. नोबडी फ्रॉम लाइक जितने भी ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन वाले जितने भी स्कॉलर्स हमने पढ़े, आप देखो कि शुरुआत में सारे के सारे हमने मेल पढ़े. बस एक थ्योरी ऐसी आई जहां पे वी हैव टॉक्ड अबाउट फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड, रूथ बेनेडिक्ट, कोरा डुबोई. ओके, और उसके अलावा तो मेजॉरिटी मेल डोमिनेटेड थी. तो
Does it mean that female were poor anthropologists as compared to male? Does it mean that female have low scientific acumen as compared to male? No. But the thing was, the one who were in power, they had the authority to give this grand narrative. So they say that this grand narrative, they display equation of power. जो पावरफुल हैं वही ये नैरेटिव दे रहे हैं, और जब वो नैरेटिव दे रहे हैं तो ये नैरेटिव हेल्प किसको करेगा? उन्हीं को हेल्प करेगा. So that is to maintain the status quo, to maintain their authorities and positions. So they reject grand narratives. Moreover, they say that grand narratives actually do not hear the marginal voices or suppresses the marginal voices. Dominant voices are heard more and marginal voices are suppressed by the grand narrative. Okay. The next thing that they say that, or they question the epistemological tendencies of classical anthropologists. What is epistemology? Epistemology means study of knowledge. ठीक है, एक है study of a phenomena, you will develop some kind of knowledge, some kind of, तो आपने कोई सोसाइटी को स्टडी किया, आपने उसके बारे में कुछ नॉलेज डिस्प्ले, बट स्टडी ऑफ दैट नॉलेज इज कॉल्ड एज एपिस्टेमोलॉजी. दैट मीन्स in simple word, knowledge of knowledge. Okay, that is epistemology. So here what they say is, they ask reason for the reason. That means, suppose you observed a phenomena, you explained or you gave a reason to that phenomena. Now what postmodernists say, what is the reason that you chose this reason to explain this phenomena? Okay, there can be multiple explanation to this phenomena. आपने उन सारी एक्सप्लेनेशन में से इसी रीजन को क्यों चुना, उसी एक्सप्लेनेशन को क्यों चुना? बहुत सारे और ऑप्शंस थे, आप उस तरीके से भी बता सकते थे, बट व्हाई डिड यू चोज अ पर्टिकुलर रीजन? द क्वेश्चन इज आस्क्ड रीजन फॉर अ रीजन. दैट इज द क्वेश्चनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजिकल टेंडेंसीज. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपका एक पर्टिकुलर रीजन चुनने का कारण शायद आपकी प्री कंसीव्ड नोशंस थे, आपके ऑलरेडी पॉलिटिकल बैगेजेस, आपके आइडियोलॉजीज, दैट एक्चुअली मेड यू गेटिंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर रीजन. तो बोले कि ऑब्जेक्टिविटी कहाँ रही फिर? आपके पुराने कंसीव्ड नोशंस, आपके पुरानी थॉट्स, आपके पुरानी आइडियोलॉजीज, आपके पास एक्सपीरियंसेस वर द रीजन दैट यू चोज ए पर्टिकुलर रीजन. से इवन फेमिनिस्ट, जैसे कि बोलने की बात है, फेमिनिस्ट मतलब कई सारे जो आज के टाइम पे पोस्ट मॉडर्निज्म, तो दे से दैट कि एक बहुत अच्छा आजकल मीम चल रहा है, एंड दिस इज अ जोक बिटवीन अ पोस्ट मॉडर्निस्ट एंड ए फेमिनिस्ट. तो बोले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए नाइफ एंड अ फेमिनिस्ट? so they say that at least knife has a point. Okay, so this is the kind of meme that they are making, ki feminists, they do not have, say, the past experiences that a particular woman might have gone through might actually shape her perception towards any kind of relations. तो उसको हर जगह में exploitation दिख रहा होगा, हर जगह पे hierarchy दिख रही होगी. Even what actually has happened with respect to feminists, they actually have seen men doing certain kind of jobs and getting more power, more authority. So what they have done, they have said that कि power कहाँ से आएगी? Economic empowerment से. और egalitarianism कैसे आएगा? Economic empowerment से. So what actually the today's feminists are doing, they are basically pushing the women towards those areas that has been occupied by men. पर करना क्या चाहिए था कि basically hierarchy of work को खत्म करो, that no work is superior to another form of work, every work is equivalent. But they say that कि why did they choose this explanation? Because उनका past experience ऐसा था, उन्हें देखा कि आदमी पैसा कमा रहा है इसलिए पावरफुल है,
तो उन्होंने बोला कि सॉरी, आदमी पैसा कमा रहा है, आदमी पावरफुल है, तो मतलब पैसा कमाना इज द रीजन फॉर मैन बिकमिंग पावरफुल. Okay, so I might have told you after this, therefore, because of this. Okay, so this is कि आदमी पैसा कमा रहा है, आदमी पावरफुल है. Okay, so powerful after this, therefore, because of this. So any event that is happening after another event, so the preceding event might be said to be the cause for the succeeding event. After this, therefore, because of this. तो आदमी पैसा कमा रहा था, आदमी पावरफुल है, तो आदमी पावरफुल इसलिए है क्योंकि आदमी पैसा कमा रहा था. So this is what feminists actually suggest. Now this is what they ask. They ask reason for a reason. What is the reason for it, or why you chose certain particular reason? Is there any kind of political baggage? Is there any kind of past experiences? Is there any kind of preconceived notions, or your socio-cultural identity? What is the reason for choosing a particular explanation? Or maybe they have questioned like structure functionists. Why did they presented a over harmonious picture of the society? Why didn't they recognize conflict? Okay, and Andaman May, Redcliffe Brown actually went there and studied Andamanis. Very recently, thousands of Andamanis, they have died in Battle of Aberdeen. Okay, that was a battle in which the Andamanis were fighting with bows and arrows along with the Britishers, जो basically gun से मार रहे थे. And several Andamanis, they died because of epidemic that was brought by the Britishers. Okay, and वहाँ पे वो बता रहे कि ceremonial weeping करते हैं, वो बढ़िया एकदम chill life है, एकदम एक दूसरे से गले मिलते रहते हैं, बढ़िया खुश हैं. Okay, why that reason? Because the funding was given by the colonial power. Okay. So this is the questioning of epistemological tendencies of the anthropologist. They ask reason for a reason. Okay. Now second thing, they basically question the methodology used. What different kinds of methodology that has been used? तो बोले कि methodology that they used like interview or maybe case study or maybe schedules or participant observation, field work and all, they have said that in all these kind of methodology objectivity is not possible. Okay, moreover, suppose करो कि आप कितना भी कह लो, कोई एक नया बंदा आपकी सोसाइटी में आपके घर में आके कल से रहने लग जाए और बोले कि मैं बस आपके साथ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ सो दैट आई कैन राइट अबाउट योर हाउस होल्ड लाइफ और राइट अबाउट हाउस होल्ड लाइफ ऑफ से ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो वो आपके घर में रहने लग जाए. सो डू यू थिंक इज इट एनी वेज पॉसिबल दैट दैट पर्सन, मतलब आपका बिहेवियर इफेक्ट नहीं होगा, आपके घर में कोई नया बंदा आ जाएगा तो इवन अगर वो बंदा 10 बार से रिलेटिव भी हो, बहुत साल से आप जानते हो, वो भी आके आपके घर में 10 दिन के लिए रहे, तो आप सबके बिहेवियर, आप सबकी भाषा बहुत ज़्यादा बदल जाती है. हाउ यू टॉक टू योर सिबलिंग in absence of somebody and in presence of somebody will be very much different. When siblings fight, you know it. Okay, but कोई और रह रहा है तो डेफिनेटली वो ट्रू पिक्चर तो कभी नहीं आएगी. प्लस पहली चीज तो आप उस बंदे को रहने नहीं दोगे, बोले भाई नहीं यार हमको नहीं चाहिए हमारी स्टडी. पर अगर वो बंदा रह रहा है तो डेफिनेटली वहां पे पावर इक्वेशन है कि आप उसको मना नहीं कर सकते, isn't it? अगर आप उसको मना कर सकते तो डेफिनेटली आप, कौन चाहेगा कि मेरे घर में आके कोई बंदा रहे और मेरे बारे में कुछ लिखे और ये सब करे, कौन चाहता है? तो डेफिनेटली द मेथोडोलॉजीज दे एक्चुअली शो पावर imbalance or power equation between the observer and the observed. The one who is the observer is at a higher power pedestal as compared to the one who is being observed. ठीक है, तो पावर हायरार्की है, पावर हायरार्की है तो डेफिनेटली द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जर्व्ड विल बी चेंज्ड, इंपैक्टेड. मोreover जो इंफॉर्मेशन होगी वो क्रेडिबल नहीं होगी. They are basically, moreover they ask the question about the omnipotence of the anthropologist.
omnipotence, potence means power and omni means all powerful. So who has made anthropologists as the authoritative figures in cultural ethnography? किसने बोला कि तुम ही हो जो किसी के कल्चर के बारे में लिखोगे तभी उसकी वैलिडिटी होगी? Who gave them? So self proclaimed power is there. कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं तो वी आर द अथॉरिटीज ऑफ कल्चर, वी आर द वंस जो किसी कल्चर के बारे में लिखेंगे तो उसको सही माना जाएगा, अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं है तो वो गलत माना जाएगा. ठीक है, एक पर्टिकुलर नेटिव अपने कल्चर के बारे में लिखे तो वो गलत है बिकॉज एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं है. एक आउटसाइडर अपने कल्चर के बारे में लिखे तो सही है. आप समझ रहे हो? सो दे बेसिकली क्वेश्चन द ओमनीपोटेंस ऑफ द anthropologist as an authority of cultural text. Okay. Now what they say is that complete objectivity is an illusion. Objectivity एकदम गलत है, ये 100% ऑब्जेक्टिविटी हो ही नहीं सकती बिकॉज अल्टीमेटली जो स्टडी कर रहा है वो खुद एक इंसान है, कोई रोबोट तो है नहीं. तो जब वो इंसान है तो उसके इमोशंस हैं, उसकी वैल्यूज हैं, उसका सोशल अपब्रिंगिंग है. सो नोबडी कैन कंप्लीटली डिटैच oneself फ्रॉम हिज ओन सोशल अपब्रिंगिंग, हिज वैल्यू सिस्टम एंड कैन बिकम 100% ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मतलब फ्री फ्रॉम वैल्यूज, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वैल्यूज और बायसेस. ओके, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि आज हम तो सब सोशल बीइंग्स हैं, वी ऑल हैव सोशल अपब्रिंगिंग. so how can somebody be free from values? Okay, so one statement that postmodernists say that there is no absolute truth. There is no absolute truth. मतलब हर किसी की अपनी अपनी सच्चाई है और मेरी सच्चाई उतनी ही सच है जितनी आपकी सच्चाई हो. ठीक है, so they promote extreme culture relativism. So my perception, my truth is as valid as your truth. Just because आप यूरोप से हो, वाइट हो और मेल हो, it doesn't make your truth better than or greater truth than my truth. मेरा सच है, आपका अपना सच है. So there is no absolute truth. Okay, your truth can be true for you, my truth is true for me. No absolute truth. Okay, so every statement has some element of falsity in it, and every true statement has some element of falsity in it, and every false statement has some element of truth in it. Okay, and ये वहीं से आ रहा है कि they are rejecting any kind of theory that will try to, or any kind of grand narrative that will try to paint a homogeneous picture of all the cultures, homogeneous picture of all the societies across the world. लेकिन ये सब सही नहीं है. और दो केसेस हमने पहले भी देखे जहां पे एक ग्रैंड नैरेटिव was trying to create a homogeneous picture, say religion and the science, and both failed miserably. And that's why there cannot be a singular theory or a grand narrative that can explain all the cultural phenomena across the world. ठीक है, so what they promote or what they suggest, they promote globalization. बोले कि ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा? डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज विल हैपन. ट्रू ग्लोबलाइजेशन से what will happen? Democratization of knowledge. Okay, the source of the knowledge will become anonymous, and this is truly what is happening. Okay, the source of knowledge will become anonymous and everybody will have equal exposure. मतलब आप समझो कि आज के टाइम पे जो व्हाट्सएप आ रहा है, अब आपके पास व्हाट्सएप कुछ आता है, आपको नहीं पता कि वो किसी वाइट यूरोपियन मेल ने भेजा है या किसी इंडिया में बैठे किसी आदमी ने आपको भेजा है. राइट, अनोनिमस सोर्सेस से फेसबुक पे कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, यू डोंट नो एनी, रैंडम पेजेस आर देयर, और मे बी यूट्यूब पे आप कुछ देख रहे हो, अनोनिमस सोर्सेस, एंड वी आर सराउंडेड बाय ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बम्बार्डेड बाय लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. अब अपनी चॉइसेस,
आप किस इंफॉर्मेशन को सच मानो, किसको नहीं। अगर जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो देन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाज नॉट एनोनिमस, दैट मींस एन एनी इंफॉर्मेशन वाज कमिंग विद द सोर्स, एंड उस सोर्स के साथ उसके साथ पावर इक्वेशन भी अटैच थी। जब आपको ये बोल दे कि ऑक्सफोर्ड से आया है या कैम्ब्रिज से आया है, ओके, तो फिर उसकी वैलिडिटी ज़्यादा है कि वो वहाँ से पढ़ के आया है तो सही बोलता होगा। दिल्ली का पढ़ा हुआ है, मेरठ से पढ़ा हुआ है, तो भैया उसकी वैलिडिटी नहीं है। तो एनोनिमिटी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, ओके, कि एक्सपोजर सबको इक्वल है, तो दे प्रमोट ग्लोबलाइजेशन, ओके। देन ethics is relative. Culture to culture अपने अपने ethics है. There is no universal moral value. Okay. And the most important, that is reflexivity and reflexivism. Or usually you will find reflexivism and positionality. ठीक है. This is very much valid with respect to anthropological studies. Reflexivism and positionality. So what is reflexivism and what is positionality? Positionality means to basically one's position, one's status while conducting an anthropological research. One's position मतलब कि आप कौन सी थॉट्स में बिलीव करते हो, आप राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ हुई है, ओके, डू यू बिलीव इन कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, ओके, और डू यू बेसिकली आर ए कंजर्वेटिव और ए लिबरल पर्सन। ये सब अपनी पोजीशन को एक्नॉलेज करना, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिविज्म। सेल्फ सब्जेक्टिविटी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेल्फ सब्जेक्टिविटी and how it might impact your research. Acknowledgement of self subjectivity and how it might impact your research or it might have impacted your research. This is called as reflexivism. एक तरीके से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, अपना रिसर्च आपने लिख दिया, उसके बाद आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि what I was thinking when I was doing that research, what were my thoughts when I was doing that research, and how this thinking, thoughts and ideologies would have impacted my research work, and इससे मेरा रिजल्ट कैसे इम्पैक्ट हुआ होगा. दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिविज्म और रिफ्लेक्सिविटी. सो दे से दैट जब कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिसर्च करने जाता है, खास करके व्हेन ही गोज फार अवे फ्रॉम होम, ही माइट कंपेयर his study or he might basically try to write something similar to what has been written by the classical anthropologists like Ivan Spichard, Redcliffe Brown, Malinowski. इन सब के जैसा कुछ काम करना चाहेगा वो. ओके, देयर इज ऑलवेज ए कंपैरेटिव टेंडेंसीज दैट इज देयर इन द एंथ्रोपोलॉजी. जैसे आप भी आज मान लो कि फ्यूचर में आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन जाओ एंड यू वांट टू यू हैव गॉन फॉर सम काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन फील्ड वर्क मेथड आप करना चाहते, फील्ड वर्क में जा रहे हो and you are writing the ethnographic research or ethnography. In that case, definitely you would like to follow some classical anthropologist, the way he has written the ethnography, the way he has presented his data, okay, ताकि आपका भी नाम उनके जैसा हो या धीरे धीरे उनके जैसा लिया जाए. कहीं ना कहीं से आप उन सोसाइटीज को, मतलब उनके आइडियाज को यूज करोगे अपनी सोसाइटीज को एक्सप्लेन करने के लिए. But here reflexivism says that when you do so, you have sacrificed your objectivity at that point of time, because you are now influenced by a particular theory, a particular ideology. आपकी objectivity तो खत्म हो गई, and definitely these kind of thoughts might have impacted your research work. So acknowledge it and acknowledge how it might have impacted, and basically उसके basis पे आप
अपने रिसर्च को मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर एटलीस्ट लोगों को ये बता सकते हो कि हाँ मेरी थॉट्स ऐसी थी एंड इसकी वजह से मेरी रिसर्च में आपको ये बायस देखने को मिलेगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिविज्म. नाउ पोस्ट मॉडर्निस्ट से दैट कि रिफ्लेक्सिविज्म बेसिकली ends the difference between the observer and the observed. मतलब ये स्टेटमेंट आप समझो, that culture merely becomes a background for one's own study. अगर आप रिफ्लेक्सिविज्म कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप रिफ्लेक्सिविज्म को फॉलो कर रहे हो, आप किसी और कल्चर को स्टडी कर रहे हो? नो, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर स्टडीइंग योरसेल्फ. So you're not studying your somebody else's culture, but you're studying how your thought has shaped a particular perception of that culture. So indirectly, the difference between the observer and the observed actually ends due to reflexivism. Observer is studying himself. Reflexivism में क्या कर रहा हूँ? अपने थॉट्स को ही तो स्टडी कर रहा हूँ कि मेरी थॉट, मेरी आइडियोलॉजी, मेरी कल्चरल अपब्रिंगिंग, मेरे परसेप्शंस, मेरे प्री कंसीव्ड नोशंस की वजह से मैं इस कल्चर को कैसे देख रहा हूं. तो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड बेसिकली बिकम्स blurred. Reflexivism promotes an anthropologist studying about himself. Okay, this is what is called as autoethnography. This kind of ethnography actually became very famous during COVID. कोविड में क्या हुआ, या फील्ड वर्क तो कर नहीं सकते थे, लॉकडाउन हो गया. अब जब लॉकडाउन हो गया, फील्ड वर्क कर नहीं सकते थे, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट व्हाट दे डिड, दे मेड देयर ओन हाउसेस एज द न्यू फील्ड. उनका खुद का घर उनका फील्ड बन गया, एंड दे देमसेल्फ और देयर फैमिली मेंबर्स द न्यू ऑब्जर्व्ड पीपल. और वो अपने ऊपर ही एथनोग्राफी लिखने लगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑटो एथनोग्राफी. एंड रिफ्लेक्सिविज्म में भी तो यही चल रहा है, दैट इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग समबडी एल्सेस कल्चर, you are introspecting or acknowledging your own thoughts, and that's why the difference between the observer and the observed becomes blurred. Are you getting this idea? Okay, so ये एक छोटा सा नोट लिख लो आप इस पे. रिफ्लेक्सिविज्म, reflexivity or reflexivism is the examination of one's own belief, examination of one's own belief, judgment, and practices during research. And practices during research. All the anthropologists do comparisons of one kind or another. Do comparison of one kind or another. They all have some preconceived notions. They all have some preconceived notions, ideological baggages, and political inclinations that might affect their research work. Through reflexivism, an anthropologist can acknowledge
self subjectivity, can acknowledge self subjectivity, and how it might have shaped his research shaped his research. Last line. Culture under description becomes a mere background for the anthropologist's exploration of his or her own cultural and social identity. Become mere background for anthropologist's exploration of his or her own cultural or social identity. The line or the difference between the observer and the observed, becomes blurred. एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी और कल्चर की नहीं, वो खुद की स्टडी करने लग गया है, अपने थॉट्स और अपने परसेप्शंस, और कैसे उसके परसेप्शन दूसरे कल्चर की मतलब उसकी व्यूज को शेप अप कर रहे हैं, हाउ ही इज व्यूइंग द अदर कल्चर बिकॉज ऑफ हिज थॉट. So it's not a study of the other culture, but a study of oneself. The difference between the observer and observed becomes blurred due to reflexivism. Okay, and इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है that was a study by Renato Rosaldo. Okay, so he wrote a book, Grief and Headhunters Range. Grief and Headhunters Range. So यहाँ पे he studied a tribe called as Ilangot. So actually they were headhunter tribes, and they have a lot of rage, a lot of anger इलंगोट्स में. ठीक है, तो जब इलंगोट को स्टडी ये करने जा रहे थे, what actually happened, his wife whose name was Michelle Rosaldo was already present there. ठीक है, and along with his 2 children, and she was doing some kind of research, इलंगोट को स्टडी करने जाना था. Now what actually they live somewhere in the hillside. अब वो वाइफ अपने घर से she was going to some upper side of, मतलब वो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, तो वो हिल ट्रैक को कवर कर रही थी, एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड, उनका पैर स्लिप किया और वो गिर गई और उनकी डेथ हो गई. ओके, मिशेल रोसाल्डो. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंड, he was holding the dead body of his wife in his hand, and he basically had some kind of feeling. मतलब उन्होंने लिखा कि that rage जो मेरे अंदर था अपनी वाइफ को लेके, how can she be so stupid, how can she be so careless that she could not, or she was taking so risky steps, and how can she dare to leave this world, what will I do without her. Holding the body of his wife in his hand, he basically was thinking or made this statement, और बोला कि this is the feeling which I had. और उन्होंने बोला कि इसी से 4 साल पहले बोला कि she actually knew the same kind of irresponsible attitude that my brother had, which led to his death. 4 साल पहले उसके भाई की डेथ हुई थी, और बोला कि वो भी इसी वजह से हुई थी, कार एक्सीडेंट में, कि वो बहुत केयरलेस था, and she knew this carelessness would lead to the death of the person, और वो फिर भी इतनी केयरलेस क्यों थी. How can she be so irresponsible?
एंड दैट रेज इन हिम, कि उसकी केयरलेसनेस की वजह से इसका कितना बड़ा लॉस हो गया. ओके, शी हैज लॉस्ट हर लाइफ एंड ही इज पेन्ड, ही इज ग्रीविंग बट एंग्री. ग्रीविंग ऐसा कि वो रो नहीं सकता, पर उसको गुस्सा है बहुत ज्यादा, अंदर से भरा पड़ा है. ओके, ही यूज दिस फीलिंग टू एक्सप्लेन द हेड हंटर्स रेज. बोला कि हेड हंटर्स रेज कैन नॉट बी, मतलब आपको समझना है तो मैं उनके रेज को इस तरीके से समझ रहा हूं कि द सेम रेज दैट आई हैड व्हेन आई वाज होल्डिंग द डेड बॉडी ऑफ माय वाइफ इन माय हैंड, द सेम रेज. एंड ही यूज दिस रेज और he used this feeling to explain this head hunting practice among the Ilongot. बोला कि there are youth जिनको बहुत सारे frustrations, बहुत ज्यादा गुस्सा है किसी बात का, और जब ये गुस्सा आता है तो head hunting is a mechanism to vent out their anger. They cut the head of the person, जो भी उनका enemy होगा, and the head of that person or the skull of that person is like a victory trophy for them. वो इतना गुस्सा है. तो उन्होंने एक तरीके से हेड हंटिंग नहीं बताई, उन्होंने क्या बताया कि मेरा गुस्सा कैसा था व्हेन आई वाज होल्डिंग द डेड बॉडी ऑफ माय वाइफ इन माय हैंड. एंड इंस्टेड, एक्चुअली आपको क्या लग रहा है कि इज इट रोसाल्डो टॉकिंग अबाउट इलंगोट्स प्रैक्टिस ऑफ हेड हंटिंग और यूजिंग इलंगोट्स हेड हंटिंग प्रैक्टिस टू एक्सप्लेन हिज रेज when what he was feeling when he was holding the dead body of his wife in his hand. Okay, that is the difference between the observer and the observed actually becomes blurred. समझ में नहीं आ रहा है कि रोसाल्डो अपनी एंगर के थ्रू इलंगोट्स को एक्सप्लेन कर रहा है या इलंगोट्स की प्रैक्टिस को यूज करके अपनी रेज को बता रहा है कि मेरे अंदर भी उतना गुस्सा है, मेरे अंदर भी वो फ्रस्ट्रेशन है, दैट elongates which they have or the rays that they have that makes them go for head hunting. I would do the same thing, something like that. Okay, that is autoethnography, that is reflexivism. The difference between the observer and the observed becomes blurred. This is the grief and head hunters rage. Clear है ये? Okay, आप चाहो तो ये लिख लो छोटा सा. रोसाल्डो, रेनेटो रोसाल्डो नाम है उनका. रोसाल्डो presented a complex methodological interplay of rage of Ilongots with his own rage and identity, as he dealt with tragic death of his wife. Tragic death of his wife. He used that emotion to explain head hunting practice among Ilongots. Head hunting among Ilongots serves as a culturally defined outlet for intense rage and emotional volatility among Ilongots. Okay, next point. Rosaldo
article, or sorry, Rosaldo explanation या article takes away the distinction between the observer and the observed, as it is difficult to understand whether he is using his emotion to explain Ilangot, or the other way round, that is Ilangot's emotion to explain his rage, or the other way round. Okay. Now another scholar, मतलब आप जब भी पोस्ट मॉडर्निज्म का आए, अगर अनलेस एंड अनटिल आस्क्ड अबाउट स्पेसिफिक स्कॉलर, तो रोसाल्डो और बेरेट स्टैनली के बारे में पहले लिखिएगा, ठीक है. तो बेरेट स्टैनली, so he just says that कि in postmodernist world the ethnography should include opinion of all the sections. मतलब ऐसे नहीं है कि dominant opinions को ही place देना चाहिए. Okay, opinions of all the people that they are studying. Okay, then they should have a sense of relativism and reject any grand theory, because आप जब generalize करते हो तो आप minority opinions को reject कर देते हो. Reject any grand theories. Okay, so now he classified ethnographies into 4 types. First one is realistic ethnography, that actually tries to explain the realistic picture of a particular culture. Say Malinowski's ethnography, Tobriand's. Okay, that is realistic ethnography. Then there is experimental ethnography, whose basic explanation is dependent on some kind of experiment. Say Cora Dubois, study of Allori, she conducted some kind of psychological test, ink blot test and all that. Uske basis pe she came up with a conclusion that they have a kind of shallow personality, gave the idea of modal personality, right? So experimental ethnography. Then interpretive ethnography. Okay, we know that Clifford Geertz, interpretive ethnography. And the last one is reflexive ethnography or postmodernist ethnography. So mostly postmodern ethnography or reflexive ethnography is the one which uses subjectivity, emotions and reflexivism in ethnographic study. वो objectivity जब possible नहीं है तो बस acknowledge कर लो कि मैं subjective हूँ. In fact subjectivity को use करो explain करने के लिए, like Rosaldo did. He used his emotion to explain the rage of the headhunters. That is openly saying that इससे बेहतर तरीके से बता ही नहीं सकता था कि वही फीलिंग जो मैं फील कर रहा था जब मैंने अपनी वाइफ की डेड बॉडी हाथ में पकड़ी थी, वही सेम फीलिंग आई फील वो हेड हंटर्स के अंदर में होती जब वो हेड हंट कर रहे हो. ओके, एंड ही सेज दैट देयर कैन नॉट बी ए बेटर कंपैरिजन, बेटर स्केल टू मेजर और एक्सप्लेन दैट रेज. ओके, so that is, this ethnography actually makes sure they use subjectivity, or they can use subjectivity, emotion and reflexivity in an ethnographic research. Moreover, ये already existing ethnographies की research re-study करेंगे to find out what's in between the lines, something which is not mentioned but कुछ ना कुछ political ideologies, मतलब
पर्दे के पीछे भी क्या चल रहा था, लिखा तो कुछ गया बट दिमाग में क्या था उस समय, क्या आइडियोलॉजी थी, क्या रीजन था. तो दे विल गो फॉर दैट समथिंग इन बिटवीन द लाइंस, जो चीज एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं, वो ऐसा क्यों लिखा गया, क्या थॉट्स थी, क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी, उसके ऊपर बात करें. Okay, rather than going for some new cultural studies and all that. So 4 particular types of ethnographies they have talked about, or Stanley has talked about. Okay, next scholar, Jacques Derrida. Okay, इनके 3 major ideas हैं. First one is deconstruction, logocentrism and aporia. Deconstruction, logocentrism, aporia. So what is deconstruction? Okay, so deconstruction actually means avoiding excessive loyalty to one particular idea and looking the merit in the opposite idea. Okay, so Derrida says कि suppose if you prefer equality over inequality, तो आपने क्या किया कि inequality के बहुत सारे merit है उसको ignore कर दिया. कई जगह पे inequality would have been better compared to equality. जैसे कि corporate structure में, army में, if everybody is equal, उस केस में who will give the command? ठीक है, ऑफिस में और प्रेसिडेंट हाउस में, प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिकल सेटअप में, आपके ब्यूरोक्रेसी में अगर सबके सब बराबर हो गए तो बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो हु इज सपोज टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू हुम? ओके, इट विल क्रिएट होर्ड लाइक सिस्टम, झुंड बन जाएंगे जहां पे किसी की कोई स्पेशलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी. ओके, so at some instances inequality has some merit, but when you prefer equality over inequality, you actually are ignoring the merit of the opposite idea, and that is deconstruction. That is avoiding excessive loyalty to one particular idea in order to find merit in the opposite. Okay, so when we go for deconstruction of text, so we find that, or what we do is we try to find out that idea to which the scholar has been excessively loyal, जिसकी वजह से उसके टेक्स्ट का एक पर्टिकुलर शेप आ गया है. एक आइडियल, आप समझो कि अगर प्रो आप कोई जैसे कि जेएनयू वाले हैं, से एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, सो डेफिनेटली दे हैव सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल लीनिंग्स, एंड इस वजह से जो भी उनकी पॉलिटिकल राइटिंग्स होंगी, दे आर सफर्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल लीनिंग, ऑल्दो दे आर saying that it is good for the welfare of the people, but their concern is not the welfare. In the disguise of welfare of people, what they write is something what their political ideology makes them write. The same is the case with the right-wing scholars. In disguise of talking about the welfare of the people, they basically write something which is in congruence with their own ideology. आप समझ रहे हो? तो वो बात कोई भी वेलफेयर की नहीं कर रहा, या कुछ जगह पे डेफिनेटली कुछ इनके फंडे वेलफेयर में ज्यादा हेल्प करेंगे, कुछ उनके, but just because they are attached to a particular ideology, they are basically funded by a particular ideology. In that case you will find that certain controversial self contradictory statement भी वो बोल देंगे कि वो बोल रहे हैं कि वेलफेयर की बात तो करेंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज की कई जगह पे उनकी आइडियोलॉजी इस चीज की परमिशन नहीं दे रही, तो वो अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दे. दैट मीन्स दे आर इग्नोरिंग द मेरिट इन द ऑपोजिट वन. तो मान लो ऑपोजिशन क्या होता है? ऑपोजिशन इज सपोज टू वर्क फॉर welfare of, or to make sure that the government is in check. Now when the opposition works in such a way that a particular person is in check, तब तो opposition has lost its relevance. So this is the problem, क्योंकि opposition government को oppose नहीं कर रही है,
ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को अपोज कर रही है। और उस केस में क्या हो रहा है, अल्टीमेटली दे ऑपोजिशन से रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन, ऑल्दो दे आर contradictory to each other, they are united by a common ideology that they both are working for the good of the nation, betterment of the nation, right? पर अभी क्या हो कि अब गवर्नमेंट कुछ भी करे, ऑपोजिशन उसको अपोज करे, बिल को पास ही ना होने दे, बोले कि चाहे वो कितना अच्छा हो लेकिन नहीं करना है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। तो फिर दैट मीन्स दे आर बेसिकली अपोजिंग। ऑपोजिशन का मतलब यही नहीं होता कि हमेशा अपोज ही करो, यू बेसिकली आर इग्नोरिंग the merit in the opposite idea. Okay, so this is what deconstruction would do. Deconstruction of a particular text, it will try to identify a particular ideology, a particular bias which might have shaped that text, and due to which the text of a particular type has been created. Okay, so deconstruction means avoiding excessive loyalty to a particular idea and to look for merit in the opposite one. तो इससे क्या होगा कि मार्जिनल वॉइसेस सुनी जाएंगी, सारे आइडियाज को इक्वल जगह मिलेगी। ओके, वन आइडिया विल नॉट बी प्रेफर्ड ओवर अनदर आइडिया जस्ट बिकॉज वो डोमिनेंट वॉइस है। ओके, so logocentrism and aporia. So logocentrism means that humans basically have cravings for logic. We have cravings for logic, and once we have developed a particular logic, this logic becomes the center of all our thoughts. एक तरीके से एथनोसेंट्रिसिज्म का थोड़ा सा ब्रॉडर वर्जन है लोगोसेंट्रिसिज्म, दैट वी हैव क्रेविंग्स फॉर अवर लॉजिक, मतलब हर चीज का एक लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक है, एंड दैट लॉजिक विल देन बेसिकली बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड अदर फिनोमेना ऑल्सो। एक बार लॉजिक बना दिया तो जैसे बोला गया कि आईक्यू टेस्ट है, बोला इंटेलिजेंस कैसे नापेंगे, बोला कि आपके मैथ वैथ की कुछ प्रॉब्लम देंगे, आप जितनी तेज सम डिफरेंस और ये सब कर लेते हो तो उसके बेसिस पे आपका आईक्यू हाई होगा। नाउ हाउ अ पर्सन हु कैन सॉल्व मैथ्स इज मोर इंटेलिजेंट दैन अ पर्सन हु इज good with his friends? Means how can, means a person who is a good human being, a person who basically is a big philanthropist, or maybe a person who actually shares, or he is good with his family member, has a happy family and is able to manage family affairs better, is less intelligent than a person who can solve good mathematics but has a miserable family life, has a divorced condition, मतलब उसकी बीवी छोड़ के चली गई, उसके घर में बवाल चल रहा है, उसके दोस्तों से उसकी अच्छी लड़ाई बात नहीं होती है, is undergoing some kind of mental depressions, okay, लाइफस्टाइल स्ट्रेस में है, बट वो मैथ्स अच्छे सॉल्व कर लेता है, उसकी मैथ्स बहुत तेज चलती है, ओके, ही इज मोर इंटेलिजेंट दैन अ पर्सन जो शायद मैथ्स में उतना अच्छा नहीं था, 10th में शायद पासिंग मार्क्स से पास हुआ, but still he has a very happy family life, his friends love him, his family members love him a lot, he is respected by everyone but cannot solve maths properly. Okay, so कौन इंटेलिजेंट ज्यादा है, the one who is solving maths is having, so this is a baseless logic. We crave for logics, हमें कुछ लॉजिक चाहिए हर चीज के लिए, okay, and sometimes we hate confusion so much that will create logic for it. We do not want to go into the state of confusion, हम कभी अपनी मर्जी से ही कोई लॉजिक बना के उसको दे देंगे, so that is the craving for simplicity. We do not, हर चीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए, we cannot tolerate confusion, isn't it? so अगर नहीं मिलेगा तो अरे मतलब जैसे कि आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे होता है कि आप देखो कैसे थ्योरीज बन जाती है, बालासोर हुआ अभी जो ओडिशा में ट्रेन एक्सीडेंट, और मे बी पुलवामा हुआ, सो द इमीडिएटली व्हाट एक्चुअली हैपेंड, आप थ्योरीज बनना शुरू हो जाती है, वी डोंट नो व्हाट इज द रीजन फॉर द एक्सीडेंट, वी डोंट नो व्हाट वाज द कॉज फॉर
द अटैक ऑन द पुलवामा, ठीक है, जो पुलवामा अटैक हुआ था उसका क्या रीजन था, गवर्नमेंट ने कराया, ऑपोजिशन ने कराया, या इट वाज ईदर ए टेररिस्ट अटैक, और क्या था, वी डोंट नो एक्चुअली। बट एक्चुअली हमारी आइडियोलॉजीज की वजह से हमने अपनी अपनी थ्योरी बना के अपने दिमाग में रख ली। बालासोर में भी ऐसा ही हुआ। अब एक पर्टिकुलर थ्योरी चल रही है कि कोई ऑपोजिशन वालों ने कराया है इलेक्शन से पहले, और बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं, किसी ने सॉफ्टवेयर हैक कर लिया था रेलवेज का, जिससे पूरे जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो पूरी फेल कर गई थी, एंड ऑल दैट स्टफ दैट इज गोइंग ऑन। ओके, नाउ वी आल्सो डू हैव सम काइंड ऑफ लॉजिक्स, क्योंकि वी हेट दिस फीलिंग ऑफ नॉन क्लैरिटी, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हो, वी डू नॉट लाइक इट, वी वांट टू हैव सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, क्लैरिटी एंड ऑल दैट स्टफ। So he says that this man should be cured of his cravings for simplicity. Okay, man should be cured of his cravings for logic. And जब आप ये लॉजिक के लिए क्रेव करते हो तो आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को बहुत ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन कर देते हो। ओके, you will give an oversimplified explanation of a too complex phenomena because you have cravings for the logic, logocentrism. Okay, and cravings for the logic so and so that that person with who is logical, person who is having a particular type of logic, मतलब वो अगर वो बात करेगा कि सपोज करो इफ आई एम टॉकिंग, मान लो मैं और मेरे साथ दो लोग और हैं, और वी आर टॉकिंग अबाउट से एनी काइंड ऑफ फिनोमेना, से फैमिली गेटिंग डिस्टेबलाइज्ड या न्यूक्लियराइज्ड, ठीक है, एक थोड़े संत टाइप के आदमी है, और एक आदमी आया है, ये मान लो यूनिवर्सिटी से, किसी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और ये सब। ना संत जो बोल रहा है वो कैसे बता रहा है कि ये सब भगवान की लीला है, ये सब भगवान, और मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि लोगों का भगवान में विश्वास कम हो रहा है, इस वजह से कमिटमेंट और ये सब चीज़ों के ऊपर जो स्टेबिलिटी थी वो कम हो रही है, जिसकी वजह से मैरिज भी ब्रेक डाउन हो रही है, मान लो ऐसा कुछ एक्सप्लेन। और नाउ द अदर पर्सन स्पीकिंग इन इंग्लिश, he says that according to so and so Pew Foundation and XYZ Foundation, they have come up with some kind of data जिसमें ये बता रहे हैं कि economic empowerment is leading to the destabilization of the family. Now this person will immediately be इसको sidelined. Why? Because we have been trained that anybody speaking in English coming from this Ivy League universities or say elite universities and is a white European Caucasian male, भाई वो ज़्यादा साइंटिफिक है, वो लॉजिकल ज़्यादा है, एक तरीके का लॉजिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो ज़्यादा लॉजिकल है, और दूसरे तरीके, एक तरीके के एक्सप्लेनेशन को आप इमीडिएटली रिजेक्ट कर दोगे, और दूसरे एक्सप्लेनेशन को, अगर वही कोई बीमारी का आइडिया आपको आयुर्वेद बताए तो आपको लगेगा नहीं ये फालतू है, और वही बीमारी के बारे में आपको एलोपैथ बता रहा है तो आपको लग रहा है ये सही है। तो आप एक तरीके के लॉजिक को इंफीरियर एंड दूसरे तरीके के लॉजिक को सुपीरियर बता रहे। Okay, that is the biasness. So that is logocentrism. Okay, and the last one is aporia. So that's an extension of this. He says that we do have a feeling that all human beings believe that all problems have a clear cut and need solutions. हर problem का एक clear cut need solution है, and we hate the state of confusion. Okay, but he says that state of confusion is not a sign of weaker mind but an stable mature adult mind. Person who is confused should not be considered to be a person of a weaker mind but a person with stable mature and adult mind, and he calls the state of confusion as aporia. He glorifies this state of confusion. He says that one must revisit this state of confusion, one must always revisit this aporia. And if you are in a state of confusion, don't think that you are mentally weak, but you have a stable, you have a mature adult mind. क्यों? क्योंकि आप अभी बहुत सारे इंफॉर्मेशन को के लिए ओपन हो. The moment you are clear, you are not confused,
So you have closed your mind for a lot of information. ठीक है, तो aporia is a sign of a mature adult mind, and one must go to that or revisit that state of aporia. कभी confused हो तो be happy, you have a stable, sorry, you have a mature adult mind, rather than when you are too clear about something. टू क्लियर का मतलब बेसिकली आप अपने बाकी सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आपने बंद कर दिए हैं, अब आप कोई भी नई इंफॉर्मेशन नहीं लोगे, यू आर टू एडमेंट टू स्टिक टू इट. Okay, so one should revisit this state of aporia because he is glorifying the state of confusion. Okay, so when confused, remember Derrida कि वो बता रहा है कि बढ़िया है जिंदगी में. Okay, you have a mature adult mind. Okay, now the next one is Michel Foucault. So Michel Foucault basically इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड थी. ही वॉज अ गे एंड बिलीव्ड इन sadomasochism. Okay, gay, homosexual, and sadomasochism means like one who believes in painful sexual intercourse. Okay, you must have seen that movie 50 Shades of Grey. So that is what is called as sadomasochism. Okay, so initially he was from a very affluent family, मतलब बहुत अमीर बाप थे उनके. तो जब उनके फादर को पता चला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो ही टुक हिम टू अ साइकोलॉजिस्ट. मतलब उनको लगा कि ये गे और ये सब तो कोई बीमारी है, मेडिकल इशू है, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए, बहुत ट्रीटमेंट वगैरह हुआ. एंड लेटर ऑन ही वाज मेड सो मच कॉन्शियस अबाउट हिज ओन आइडेंटिटी, हिज ओन सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, दैट ही वेंट टू अंडरग्राउंड लाइफ. अंडरग्राउंड मीन्स कि रात वात में क्लब्स वगैरह होते थे जहाँ पे इनके ग्रुप्स के लोग मिलते थे एंड दे कुड फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ, समथिंग लाइक दैट. ओके, and there he basically got the chance to read the book of Nietzsche. Okay, Friedrich Nietzsche का नाम सुना होगा आपने. Okay, the tragedy of life, and so and he also attended certain lectures by Nietzsche, and wherein Nietzsche says that we have been taught history in such a manner that we are made to believe that वक्त के साथ हमने प्रोग्रेस ही किया है, टाइम के साथ हमने प्रोग्रेस ही किया. हमको इस तरीके से बताया गया कि लोअर पेलियोलिथिक में स्टोन टूल्स बनाते थे, हम नियोलिथिक में हमने एग्रीकल्चर कर लिया, हमने बोन टूल्स बनाए, और फिर चालकोलिथिक में मेटल टूल्स बनाए, आयरन एज और बढ़िया हो गया, महल बनाने लगे. ओके, सो हिस्ट्री हैज बीन टोल्ड इन सच ए वे दैट विद टाइम वी हैव प्रोग्रेस्ड. बट ही रोट सेवरल आर्टिकल्स सेइंग दैट कि ऐसा नहीं है कि हर जगह हमने टाइम के साथ से प्रोग्रेस ही किया है, बहुत जगह पे हिस्ट्री और द टाइम ऑफ पास्ट वाज इवन बेटर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज के टाइम पे, हम लोग को इस तरीके से बताया जा रहा है कि आज की लाइफ में आप लोग, हम लोग जब छोटे थे या आप लोग अभी जब छोटे रहे होगे तो आप अपने पेरेंट्स से पूछे होगे कि आपके टाइम पे तो फोन वोन नहीं था तो आप लोग कैसे बात करते थे. एंड एट प्रेजेंट टाइम थिंकिंग अबाउट कम्युनिकेटिंग विद आवर लव्ड वंस विद लेटर. इमेजिन यू लिविंग इन दिल्ली, preparing for civil services and writing a letter to your mother which basically gets delivered maybe in 7-8 days, and then you getting a letter back in reply which ultimately, तो अब 4 साल में मुश्किल से 10 से 12 लेटर्स. so imagining that life कि यार अभी बढ़िया है, जब चाहे तब फोन कर लें, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, we basically are in a very good state. but now talk to that person who has experienced this life and that life as well, means some elder ones, maybe your grandparents, जिन्होंने लेटर भी देखा है और जो आज वीडियो कॉल पे भी बात कर रहे हैं. so imagine, so they will have so much of emotional feelings कि उस समय जो लोग लिखते थे वो बहुत दिल से लिखते थे, एक दिल से कनेक्शन था कि आपने किसी के लिए लेटर लिखा है, that means you have invested your time, you have invested your emotions in it. okay, and that was a very true feeling. and एक मतलब receiving a letter from somebody known, somebody you love, maybe your son, maybe your daughter, maybe your any relative, that was somewhat extraordinary feeling. but अभी तो कोई भी रोज सुबह हर व्हाट्सएप ग्रुप पे गुड मॉर्निंग आता है 100 लोगों से. ओके, अब यही नहीं पता कि एक्चुअली वो बंदा मेरे बारे में सोच रहा था और आई वाज जस्ट वन अमॉन्ग 100 फॉरवर्डेड मैसेजेस. ओके, टेक्नोलॉजी तो है, आज हम 100 लोगों को गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, लेकिन शायद अपने घर में वी डोंट एक्सचेंज. अपने माँ बाप को भी बगल वाले कमरे में रहते हैं, उसको भी व्हाट्सएप पे ही गुड मॉर्निंग कर रहे हैं. so we basically have been taught history in such a way that with time things have become
better and progressive. But he basically says no, ऐसा नहीं है. So he talks about several phenomena. एक दो मैं आपको बताता हूँ. जैसे madness and civilization, he wrote an article in which he says that we have been made to believe that the mental asylums have been become more human. Our attitude towards mad people have become more humane. Okay, mental asylum. बोले लेकिन ये तो गलत है. बोले कि anybody who is actually talking or who is not following the general norm is not today referred to as mad. और उस केस में हम लोग उसको अपने से दूर एक पागल खाने में छोड़ देते हैं जहां पे उसके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रही है किसी को नहीं पता. बट इन द पीरियड ऑफ रेनेसा, इन द ओल्डर एज, एक्चुअली एनी पर्सन हैविंग डिफरेंट व्यू वाज एक्चुअली वेलकम्ड इनटू द कम्युनिटी. और उनको सुना जाता था कि ये बाकी लोगों से अलग बातें कर रहा है, कि कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेगा, इसकी फिलोसफीज, इसके आइडियाज अलग है. आज के टाइम पे जो कोई थोड़ी अलग बात करे उसे पागल है ये, इसको हटा दो. ओके, so we are becoming intolerable for the differences. We don't want to hear it, and we tag that person as mentally unstable. Okay, anybody, and maybe we might advise that person to go for a psychological session, maybe for a psychiatrist, and if to the extreme case, mental asylum, madness and civilization. Or say another, he says sexuality and science. बोले कि in the past sex was an art, or which is called as ars erotica. ठीक है. So here sex was considered to be an art, and the only intention for learning that art was to maximize the pleasure. One of the several out of the arts that you can learn, like dancing, singing, cooking, stitching, or whatever it can be, painting and all. One of the art was sexual activities. Okay, so there was the tendency was to maximize the pleasure. Now what we have done with time, we have medicalized sex. Okay, the focus is not to maximize the pleasure, but the focus is on just penetration, medicalization of sex. So they say with time this also has not improved, and other सिनारियोज ऑल्सो जहाँ पे पनिशमेंट एंड डिसिप्लिन, बहुत सारे और आर्टिकल्स ऐसे लिखे जैसे कि पनिशमेंट एंड डिसिप्लिन में बताते कि आज के टाइम पे हमको लगता है कि जेल बहुत ह्यूमेन हो गए हैं, और पास्ट में ऐसा होता था कि पब्लिकली प्रोसिक्यूशन होते थे. लेकिन पास्ट वाज स्टिल बेटर बिकॉज एटलीस्ट वी न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन विद द कल्प्रिट. और अगर कोई ज्यादा पनिशमेंट देगा या कोई जबरदस्ती एग्जीक्यूट करेगा तो दैट माइट इनवाइट द राथ ऑफ द पीपल अगेंस्ट द रूलर. ओके, अभी तो क्या है, जेल है, जेल एकदम शहर से बाहर है, आउटसाइड द पब्लिक गेस. वहां पे किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, वी डोंट नो. ओके, बंदा जाता है, बाद में खबर आती है कस्टोडियल डेथ्स. ओके, एंड दैट इज द पनिशमेंट एंड डिसिप्लिन. we actually have been misguided that with time things have become better. No. So he says that we should shed this optimistic smugness with history, and we should recognize the fact that there were certain activities that were done better in the past and learn from it, rather than कि जबरदस्ती एक illusion पाल के रखें कि भाई चीजें टाइम पास से बेहतर है. Okay, just write this, ये important है, आप ये लिख लीजिए. According to Foucault, we are constantly told that a lot of things in the modern world are fantastically better than the past. He encourages us to break away from optimistic smugness about now
or about present, and to go back in history, where many things were better than the present. Okay, now one another idea with respect to Foucault is knowledge is equal to power, or knowledge creates power. Okay, so he says that knowledge creates power, and power is then used to create a specific type of knowledge which will then support it or maintain the status quo. Okay, the best example is Pegasus, जो अभी सर्वेलेंस वाला वो आया था, या सर्वेलेंस काइंड ऑफ सेटअप. तो सर्वेलेंस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आपके बारे में नॉलेज. सर्वेलेंस इज नॉट ओनली दिस कैमरास, बेसिकली द फोन दैट यू हैव, सर्फिंग दैट यू डू. तो आपके बारे में इतने पैरामीटर्स पे आपको देख रहे हैं, आपके बारे में बहुत कुछ पता है, आपके बारे में इतना पता है कि जितना आपको नहीं पता है. एंड इन दैट केस दिस नॉलेज दैट a person has for you about you makes him more powerful because he can control your behavior. I know that this time at night or at this time at day you are free to scroll through. तो मैं आपको 3-4 अगर वही आर्टिकल्स वगैरह शेयर कर दूं और मैं भी 3-4 आइटम्स ऐसे भेज दूं, तो आपकी शॉपिंग बिहेवियर्स को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैनिपुलेट कर सकता हूँ. So he is saying that knowledge equals to power, knowledge creates power, and power in turns create a knowledge that will maintain the status quo. Now which type of knowledge? Not every knowledge is equally relevant. He says knowledge about the dominant discourse. अब आप इसको colonization, मतलब आप anthropologist जो anthropology having colonial beginnings, या क्यों एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंडिया के बारे में लिख रहे थे, बिकॉज दिस विल गिव देम द पावर. द नॉलेज दैट विल बी क्रिएटेड विल बी गिवन टू द कॉलोनियल पावर दैट विल मेक देम मोर पावरफुल. ओके, तो डोमिनेंट डिस्कोर्स के बारे में, डोमिनेंट डिस्कोर्स मींस द इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट इन दैट कंटेक्स्ट. ओके, फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो हॉस्पिटल में डोमिनेंट डिस्कोर्स क्या है, मेडिकल नॉलेज. तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा, जिसके पास डोमिनेंट डिस्कोर्स के बारे में की नॉलेज हो. तो हॉस्पिटल में सबसे पावरफुल डॉक्टर. ओके, और मे बी यू गो टू अ कॉलेज, द वन हु हैज द मैक्सिमम नॉलेज ऑफ द डोमिनेंट डिस्कोर्स. मान लो अगर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, तो द वन हु हैज द मैक्सिमम नॉलेज विल बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन देयर, प्रोफेसर. ओके, द मोस्ट पावरफुल. तो द वन हु हैज द नॉलेज अबाउट द डोमिनेंट डिस्कोर्स. अब अस्पताल में एमपी एमएलए की कोई पावर नहीं. ऑपरेशन थिएटर में एमपी एमएलए कैन नॉट डू एनीथिंग. ही इज नॉट द पावरफुल पर्सन. The most powerful person there is the one who knows surgery. Okay, he can do whatever he wants. Okay, वहां पे आप एमपी हो, एमएलए हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, doesn't makes a difference. And then when you go to say any place, any kind of place, say in this class, irrespective of आपके कोई बैकग्राउंड का हो. Okay, यहाँ पे इस क्लास में I am the most powerful person. Okay, irrespective of whatever background you have, because of the dominant discourse. You are here to attend anthropology, so at comparatively, relatively, I am more aware to this subject. Maybe I am more exposed to this subject compared to you. Maybe 5 years down the line, you might be more exposed than me. But for the time being, yes, and that's why the dominant discourse की knowledge मुझे है, and I am the most powerful person. Okay, so this is what Foucault says. Knowledge basically equals to power, or knowledge creates power, and this power will in turn create a particular type of knowledge which will maintain status quo. Okay, and knowledge about the dominant discourse. This is what Michel Foucault says. Now, the criticism of postmodernism. So, first criticism is about the first statement that we saw. There is no absolute truth. तो ये statement अपने आप में self contradictory. There is no absolute truth. That means अगर ये statement सही है,
तो स्टेटमेंट अपने आप को ही काउंटर कर देगा. ओके, द स्टेटमेंट दैट देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट. Okay, second, they basically support extreme relativism, which might justify exploitation and status quo. और अब किसी सोसाइटी में मान लो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हो रहा है, वो बोले कि यार उनकी सच्चाई अपनी है, उनका कल्चर अपना है, आप उसमें ज़्यादा रैंक्स मत लगाओ, ज़्यादा अपनी ओपिनियंस मत दो. तो एक्सट्रीम रिलेटिविज्म माइट जस्टिफाई एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑल्सो माइट प्रमोट स्टेटस को और हायरार्की बेस्ड सोसाइटी को मेंटेन करने में. ओके, देन they add means nothing new to existing anthropological knowledge. तो बेसिकली जो पहली नॉलेज थी उसको तो क्रिटिसाइज कर दिया, बोले ये भी गलत, वो भी गलत, सब गलत. पर सही क्या है? बोले कि सब सही भी है. कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, every true element or every true statement has some element of falsity in it. तो बोले कि सब गलत है बट सही क्या है वो पता नहीं. Okay, so add nothing new to the existing anthropological knowledge. And next one, they actually forced or pushed anthropology away from field work. They pushed anthropology away from field work because वो बोले कि पावर इक्वेशन है फील्ड वर्क में. तो अब जो बेसिकली नए एंथ्रोपोलॉजी जो पोस्ट मॉडर्निज्म से इंस्पायर्ड है, वो बोल रहे हैं कि हम अपनी फील्ड वर्क करेंगे. भाई अपन तुमको कौन जानना चाहता है? हु एक्चुअली वांट्स टू नो अबाउट यू? ओके, सो दे हैव पुश्ड एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम प्रोफेशनल फील्ड वर्क एंड दे डू नॉट बेसिकली टॉक अबाउट एम्पेरिकल रिगर. ओके, कि कोई एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो, कोई एक जनरल थ्योरी हो, हाइपोथेसिस हो, टेस्टिंग हो, ऑब्जर्वेशन हो. they are not at all concerned about such kind of things. Okay, so these are some of the major criticism with respect to postmodernism, and that makes the end of all the theories. Okay, so that's it for today. Tomorrow we'll discuss जो भी questions हैं other than this theories in test 2. That's it for, thank you. One more thing, actually, if you are reading this theory for the first time, या फिर मतलब आप मतलब मेरे से पहली बार पढ़ रहे हो, आप इसको एक दो बार रिवाइज जरूर कर लेना. बिकॉज यू माइट हैव अंडरस्टूड इन द वेरी फर्स्ट क्लास और ये सब, लेकिन आप इसको रिप्रोड्यूस करने में ना थोड़ा एफर्ट लगेगा. तो आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस. समझ में तो आ जाता है लेकिन लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है.